Dear learners, welcome to today's session. So, wish you happy International Yoga Day. So, everybody celebrates today's, Yoga International Day, and also now it's very critical juncture you are that Corona is spreading like anything. So, I just pray, stay safe, stay home. So, what we are planning, why we are conducting this e-counseling session. So, out of everybody is, I mean, stay at home. After that, also my all colleagues of regional center work hard for our learners through online. You are conducting the e-counseling classes. In true sense, you have to come and do your face-to-face counseling session in the study center, but it is not possible now. So we don't want our learners to feel isolated. So we are organized a e-counseling session of different programs. So, but one thing I can tell you, after all efforts, the joining of the students is very less. But which way you feel that number should increase, it's not increasing. Anyway, so we are giving in the link also, that YouTube link. So our very senior academic counselors are taking the class. The all are veteran, all are very good expert in this their subject. So the Birendra Sona has done his MA, MPhil, PhD from Jawaharlal University. So now he's teaching his KIS universities. So he's a very good academic counselor. So with these words, I welcome you, sir, for today's session. So Thank you, students, sir. write your enrollment number name in the chat box. Might be you will we are going to extend our counseling session on 23rd and 24th. If sir is available, same time. The timing is 23rd, 24th is 3:30 to 5:30. But tomorrow it is 5:30 to 7:30. So after tomorrow, then another two class, 23 and 24. Sir will take these two class because although whatever the units is left it out, it is not possible to complete within a two class. So sir is request me. So I'm really thankful to Birendra Sona sir. He is ready to take another two class. So thank you very much, sir. So welcome to today's session. I hand over the session to you, sir. You start your class. Thank you so much. Thank you so much, sir. And thank you that students are connecting right away. ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର. ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି. ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି. ହେଲା ସମସ୍ତେ ଯଦି ଜଏନ୍ କରିଥାନ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳଟା ତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଅଛେ ଘରେ ଥାଇକି ଆମେ କ୍ଲାସଟା କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଆଉ ଭଲ ବି ହୁଅନ୍ତା ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁନିଟ୍ 15 ର ପପୁଲେସନ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ sociology of development ର demography study ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ ଯୋଉଟା କି ନିହାତି ଦରକାର ହୁଏ ଆଉ ସେଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ୟୁନିଟ୍ ରେ historical background, the politics of population control, environment and gender, India the population experience and development concern, conclusion. So এই ୟୁନିଟ୍ ରେ ପାଞ୍ଚଟା ସବସେକ୍ସନ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା এই ୟୁନିଟ୍ ରେ ଆମେ କଣ ଶିଖିବା ନା ଆମେ ଶିଖିବା Malthusian and the neo-Malthusian perspective on development, role of church and state on population control, politics of population control, India's population experience and development concern. So ଆମେ এই ୟୁନିଟ୍ ରେ ଦେଖିବା ଯେ କେମିତି କଣ ହେଇଛି ଏବଂ population explosion ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଦ୍ୱାରା କଣ ସୁବିଧା ହେଇଛି ଆଉ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜ ର ଏଇ sociology of development ରେ population ଟାକୁ ଗୋଟେ demography କୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଏ otherwise କଣ ହୁଏ ନା incomplete ହେଇଯାଏ sociology of development studies ଟା so ଆମେ ଏଇ ୟୁନିଟ୍ ରେ ଦେଖିବା ଯେ how population and the role of population and its relationship with development कौन सब रोल प्ले करूछि पॉपुलेशन एवं ए जो डेवलपमेंट पाई कन्वेंशनली जदि हम देखिबा ट्रेडिशनल वे इंडिया द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज अंडरस्टूड बाय द कंसर्न ऑफ डेमोग्राफर्स जो माने पॉपुलेशन को स्टडी करनते से मान को डेमोग्राफर्स बोली कहआ जाउतला एवं गवर्नमेंट सेंसस हम जानि छे प्रत्येक 10 वर्ष रे थरे हुए एवं 10 वर्ष रे जेहेतु एबे हमर 2021 रे फुनी सरीबो तो हमें देखिए आज पॉपुलेशन स्टडीज
how far it is helpful for our development in our country. So ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ how population is helpful for social economic development of the society. सोसाइटी को आगे नेबा ପାଇଁ सोसाइटी को उन्नत धरण करिया ପାଇଁ population demographic और population को भली आकार रे ग्रोथ करूची हम जानि छे ଆମ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 130 କୋଟି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି ତାରିଖରେ ବା ଏ 2020 ରେ ତାହେଲେ ଆମର ହେଇଗଲାଣି 138 କୋଟି 138 କୋଟି ରୁ ପାଖାପାଖି 60% जो अछंती 60% पाखापाखि यूथ अछंती यूथ माने जो 60% तो गोटे देशर जनसंख्या बढ़िया भल किंतु से जनसंख्या टी बा से पॉपुलेशन शुड बी एसेट सेटा जदी एसेट हे करेला हम पई ताहले बहुत भल किंतु जदी लायबिलिटी हे जीवो जदी से माने जदी डिपेंडेंट हे जेबे ताहले कोन होय ना सेते बेले ही गोटे देशर अर्थनीति ऊपर तार इकोनॉमी ऊपर से जनसंख्यार कोन भारटा पड़ी थाए बा चापटा पड़ी थाए जोथि पाई कि कहा जाए जे पॉपुलेशन हेबा उचित किंतु तार भी गोटे रेशियो रहबा उचित जो द्वारा कोन हबो ना देशर इकोनॉमिक देशर समृद्धि की हेई परिबो आम देश रे हम देखि छे जे पॉपुलेशन तो अछि किंतु ता सहित अनेक जिनिस हेई परुनी जेंति कि हम कहा जाउथिले कहि पारुछे जे पाखापाखि 21% वर्तमान सुधा भी गरीब अछंती ए गरीब श्रेणी लोक मध्य रे एजुकेशन समस्ते पाई पारुनांती एजुकेशन न पाइबार कारण भी हेउछे ई पॉपुलेशन रो गोटे कारण पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बा पॉपुलेशन ग्रोथ बा पॉपुलेशन जेतोळे इंक्रीज करूछि सेटा देश ऊपर तार गोटे प्रभाव पकै थाई इट इन्फ्लुएंस ऑन द ओवर द नेशन एटा हबा द्वारा कोन हुए ना routine concern have been raised and pronouncement made over the issue of our population levels of poverty and unemployment जेतोळे पॉपुलेशन ग्रो करे तोळे अनएम्प्लॉयमेंट भी देखा जाई थाए आमे जानि छे आम देश डेवलपिंग कंट्रीज किंतु जो डेवलप कंट्रीज अछंती तांकर मध्य ओवर पॉपुलेशन हबो द्वारा तांकर भी अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाए तांकर अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाए तांकर होची चॉइसेबल से खोजी बोलंती जे व्हिच इज सुइटेबल जॉब फॉर देम ओके हमर एठी कोन ना देयर इज नो चॉइस सो यू हैव टू डू दैट वर्क असाइन किंतु जो पॉपुलेशन जोगु ग्लोबल रे एवं वर्ल्ड सारा आमे देखिबा समस्तंकर चिंता बढ़ी चलछि जे जदि आमे पृथ्वी रे आज देखुछे 7 बिलियन पॉपुलेशन जदि हेबा को जाउछंती एवं प्रत्येक वर्ल्ड जे कोनोसी जगह रे जीवो छोटी लोक जदि ठिया हिथिबे से भितर गोटे इंडियन थिबे सो सेही कथाटा पडिछि ठीक अछि तो आमे देखुछे द मेजर कंसर्न इज दैट हाउ टू चेक दिस ओवर पॉपुलेशन high population rate is the so-called developing countries, primarily Asian and African, added the global crisis, providing a more person from the limited and already overexploited natural resources. जेतबेले overpopulation होउची जेतबेले population टा growth करूची सेतबेले कोन होउची ना आमे देखुचे जे से प्रेशर पकोची ता माने कोन ना देशर अर्थनीति ऊपर देशर नेचुरल रिसोर्स ऊपर देशर कमोडिटी ऊपर तो सेति पय ताकू चेक करिवा मध्य निहाती दरकार हेता ओवर पॉपुलेशन हेले कोन होय ना पॉवर्टी टा चेक करिवा मध्य गुटे प्रकार असुविधा हेता the development debate gains significance and brings to light the politics around the population questions राजनीति बा पॉलिटिक्स पॉपुलेशन रो माने पॉपुलेशन ग्रोथ पय मध्य चिंता करिथा जेहेतु कि देखा जाई था जे आम देश रे जेहेतु वी आर डाइवर्स सोसाइटी ता माने कोन वी हैव ऑल रिलीजियस डाइवर्सिटी अछि सम रिलीजियस डू नॉट बिलीव दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और डू नॉट गोइंग टू चेक से माने देखो सीधा सड़क मना कर दियंतु किछि पॉपुलेशन आई एम नॉट नेमिंग द पर्टिकुलर रिलीजन ओके किंतु किछि रिलीजन अछंती जो माने कि दे गो फॉर एंड आज तारीख रे जो माने एजुकेटेड हे सारलेन जो माने शिक्षा पाई सारलेन एवं जानि परछंती जे हाउ वन चाइल्ड नॉर्म्स बा सिंगल चाइल्ड नॉर्म्स विल हेल्प एटा तांको किमिति सहाय्य करिवो तांकर जीवन शैली तांकर अर्थनीति ऊपर तांकर पारिवारिक जीवन रे एवं सेटा देश पय मध्य केते किंतु हमर जेहेतु मेजॉरिटी हिंदू सोसाइटी रे या विश्वास करा जाय
বা অনেক জায়গায় বিশ্বাস করা যায় না গোটিଏ ଛୁଆ নୁହଁ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ହେଲେ କଣ ହବ ନା there will be a balance okay କି ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର କଣ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବି ଅଛି ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ଯଦି ଚାଲିଗଲା ତାପରେ ପୁଣି କଣ ହବ ସୋ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି ପପୁଲେସନ କଣ ଜନ୍ମ କରି ଚାଲନ୍ତି ସେମିତି ଅଛି ନର୍ମସ ଯେମିତି କି ପୁଅ ଛୁଆ ପାଇଁ ଯେ ପୁଅ ଛୁଆ ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ ଦିଟା ତିନିଟା ଝିଅ ପରେ ବି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ରିଜନ୍ସ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଏଇଗୁଡାକ ହଉଛି କାରଣ ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି ନା ପପୁଲେସନ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ ହେଇ ଚାଲିଛି ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଯେ ଏଠି ଯେହେତୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଥୋମାସ ମାଲଥୁସ ଯିଏକି ଏସେ ଅନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ପପୁଲେସନ 1798 ରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତା ପିପୁଲ୍ସ ଥଟ୍ ଏବଂ ଦ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ବିଲିଫ ତାଙ୍କର ରିଲିଜିୟସ କନସର୍ନ ରିଲିଜିୟସ କୋଡ ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି ନା ପପୁଲେସନ ଯୋଉ ଇନକ୍ରିଜ ହଉଛି ସେଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଜେମେଟ୍ରିକାଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଜେମେଟ୍ରିକ ରେଟରେ ପପୁଲେସନ ଗ୍ରୋଥ ହୁଏ ସେଇଟା ହଉଛି 1 2 4 8 10 12 ଏମିତି ହେଇକି ମାନେ 4 8 ଏମିତି ହେଇକି ଯାଏ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ ଆମ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସେସ ବା ଆମର ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ମାନେ ଅଲ୍ ଆକ୍ରସ୍ ୱାର୍ଲଡ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଏଇଟା କଣ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଆରିଥମେଟିକ ରେ ବଢି ବଢି ଚାଲେ ମାନେ 1 2 3 4 5 ହେଇକି ଏମିତି ହେଇକି ଚାଲେ ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ ଇଜ ଲିମିଟେଡ ତାକୁ ଯଦି ପପୁଲେସନ ପ୍ରେସର ଯଦି ବଢିବ ମାଲଥସ୍ଙ୍କ ଥିଓରି ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ପପୁଲେସନ ପ୍ରେସର ବଢିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଦେଶରେ ଯାହା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ ଅଛି ତାହା ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ସରିଯିବ କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଏବଂ ଲୋକ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ସପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡେ କାରଣ ଅଦରୱାଇଜ କଣ ହବ ନା ସେଇ ବାଲାନ୍ସ ରହିବ ନାହିଁ ତ ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ ନା ନେଚର ଉପରେ ବା ସେଇ ଦେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନା ଯୋଉ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ଯଦି ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସେସ ତା ମାନେ କଣ ନା ନଲେଜ ରିସୋର୍ସେସ ନଲେଜ ଯଦି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କଲା ଗ୍ରୋଥ କଲା ସେଇ ଦେଶର ଯଦି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କାଲି ଲୋକ ଯଦି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲେ ଯେମିତି କି ଆଜିକାଲି ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲେ କି ଡକ୍ଟର ହେଲେ କି ଲୟର ହେଲେ କିମ୍ବା ଆଡଭାନ୍ସ ଲେଭେଲର କୃଷକ ଯଦି ହେଲେ ଯଦି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ସେଇ ଦେଶ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ କଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଯଦି ଇକୋନୋମି ଠିକ ଅଛି ତାର ପପୁଲେସନ ଠିକ ଅଛି ତାର ଯଦି ହେଲ୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାର ଯଦି କଣ କହିବା ମେଡିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ଯଦି ଭଲ ନଥିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା many people will depend on one person okay so there are many households in our country that one person is earning and maybe 2 3 persons are eating like ଧର ଗୋଟିଏ ଘରେ ଯଦି ତିନିଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି କି ଚାରିଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭିତରୁ ହୁଏତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେବେ ବି ଭଲ ରୁହେ ନାହିଁ ତ ଏମିତି ହୁଏ ତ ସେମାନେ ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଲାଇବିଲିଟି ହେଇଯାନ୍ତି ଅଦରୱାଇଜ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ଚାରି ଜଣ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ଦି ଏସେଟ୍ ଫର ଦି ଫ୍ୟାମିଲି and also they are independent asset for themselves and also they are what will say asset ସେମାନେ ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି ତ ଏଇଠି ମାଲଥସ୍ଙ୍କର ଯୋଉ ଆରିଥମେଟିକ ଏବଂ କଣ କହିବା ଜେମେଟ୍ରିକ ଯୋଉ ରିଲେସନ ଅଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ଯଦି ବଢୁଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କଣ ହଉଛି ନା ସେଇ ଦେଶର ଇକୋନୋମି ଉପରେ ସେଇ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ସେଇ ଦେଶର କଣ କହିବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ ଉପରେ ତାର ପ୍ରେସର ପକଉଛି Just a minute, Virendra sir. Yes sir. Our director has joined. So Okay. Dr. S.K. Tripathi is joined. So I request you, sir, to address little bit to our students. Thank you. Sir, Tripathi sir. Thank you, Dr. Sona. Thank you very much. Actually, my intention was not to intervene in between, but I could not resist my temptation in coming into the classroom because I got a very good feedback from Dr. Santosh Panigrahi about you and about the class which is going on MSO. Though a little number of students are there, but the classes are going on very smoothly. It is something which is very satisfying.
And I am very much thankful to you that you have accepted our invitation and taking class for the Thank you, students. sir. Thank you, sir. And dear students, you should participate in the class in large number. Please, talk to your friends. If you know some of your friends, you talk to them so that they will join in large number, because such class will not come again and again. This is something which is very rare, and you should exploit the class which is made available in front of you. All of you know that not only MSO class is going on, so many other classes are also going on, because this is the only alternative left at this particular point of time. True. This classroom, online classroom. And why only IGNOU? You take, for example, any other educational institution who are operating within the boundary of our state or maybe in the national level, they are also taking classes online, because offline is absolutely not possible. Though the colleges of our state have opened from 17th of this month, but then students are not allowed to go into the classroom for teaching and learning. Therefore, it is absolutely not possible that teachers can reach out to their students only through this medium. So whatever medium is available in front of you, please exploit that opportunity to the fuller possible extent. So and it will be possible only if you come prepared. Please go through your study material, jot down important points, and come to the online classroom so that those questions will be taken up by our counselor, Dr. Suna, and discussion will take place. Okay, so that should be done in the online classroom, because time is very limited. Very little amount of time is there, that is 2 hours, and in 2 hours, quite a lot of information is supposed to be provided to you, because your study material is full of so many new things which are normally supposed to be given to you by the academic counselor. So please come with some suggestions, and always feel yourself as a resource person also. It is not that Dr. Suna is present here in this classroom as the only resource person. You all are independent resource persons. If you know something else, you come and tell in front of your friends in this particular platform, so that others will also come to know about it. Okay. So it is a business circle, and it is sharing of ideas, sharing of information. Okay. And this will be possible only if you read different kinds of study material, collect information from various sources, and come to the classroom, so that the classroom interaction will be lively, it will be enriching, and you will gain substantially out of the online classroom. And you are all mature learners, because you are doing MSO, Master's Degree in Sociology, which is one of the most prestigious program offered by this university. So you are all prestigious students. Okay. So you're all mature learners. Please come with whatever information you have in your background, and share those information with not only the resource person, but also with your friends, your peer group. And that way you should take the class ahead. So Dr. Panigrahi, thank you very much. So it's a very good thing. And Dr. Suna, I am also very much thankful to you. So Thank kindly you, sir. associate yourself in whatever way it is possible in IGNOU, so that we will try to complete all the academic activities, not only MSO but also BA Sociology. BA Sociology will start immediately after the completion of MA Sociology, and Dr. Panigrahi will take over the responsibility of take over the responsibility of conducting classes of BA Sociology after the MA Sociology classes. Okay, so kindly Sure. cooperate with him, and kindly also inform your friends, those who are interested to be academic counselors. Sure, So sir. we don't mind empaneling them as academic counselors. Dr. Panigrahi, kindly give Yes, sir. the detailed instruction to Dr. Suna, so that he'll also try at his own level in generating good number of academic counselors, those who are Sir. interested in academic counseling. So thank you very much for giving me opportunity to interact with the students. So thank you. Thank Thank you, you, sir. sir. Thank Thank you you, for your sir. nice. Thank you. I mean, now, Sona sir, you Thank you. continue your class.
Yes, sure, and thank you so much, sir. Actually, when I saw the list, 100 something students are there, I was so enthusiastic that 100 students will be joining with me. Actually, I used to go to a center. I used to teach this RCO, what is this, MSO 2. Now it is online, so at least the student can join more number. That is what my expectation. Thank you. Anyways, whatever number is the number. What we will do after the completion of all the classes, we Sir. will upload these videos in our YouTube channel so that anybody who has missed the class can Okay. get another opportunity in watching the video which is there in the YouTube channel. So All that right. also we are going to do. So there should not be any kind of panic in the minds of the students that if he has missed a class, that means he has missed once for all. No. Mhm. So the recording we are keeping and we will definitely give it to the students, those who will be in need of it. Okay. So please go ahead. Thank you very much for taking classes. Thank you so much, sir. So now, dear student, that as director sir has instructed, so we have to be attentive, and also we need to tell our friends if they can join with us more numbers. Thank you. So what I was telling is that I was telling about the Malthusian theory, that how population is grow and how it pressures on uh, natural resources, also the economic condition of the country. So Malthus proposed his theory that when even this population growth is not in India, it all across the world, especially the developed countries also face the same kind of things. Because when population explosion or population growth जदि होची बा जनसंख्या वृद्धि जदि होची ताहले कोन होची ना गोटे देशर अर्थनीति उपरे मध्ये तार चाप पड़ी थाए अर्थनीति केवल अर्थनीति नु तार से मेडिकल सिस्टम तार एजुकेशन सिस्टम तार एंटरटेनमेंट सिस्टम से सब ऊपर तार प्रेशर पड़ी थाए तो जोथि पई कि गोटे देश चिंता मध्ये करियो पड़े तो आमे देखुछे जे यूरोपियन कंट्रीज रे कौन है ना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हेबा द्वारा इंडस्ट्रियल जो प्रगति हेबा द्वारा जनसंख्या वृद्धि है एवं भी आम जब देखा नॉर्वे गोटे कंट्री अच्छे छोटे गोटे एग्जांपल दूसरी उदाहरण नॉर्वे रे आपनकर कौन सी रेस्ट्रिक्शन नहीं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे जेहेतु पॉपुलेशन बहुत कम तो सी जाई पारंत किंतु आम देश रे we have both traditional as well as the system that it won't allow you to go more than 2 child. That is one. So आमे देखुचे जे अनेक समय रे कौन हुए ना गवर्नमेंट मध्य अनेक रूल्स रेगुलेशन तैयारी करंती जो द्वारा कौन हुए ना पॉपुलेशन टा चेक करि हबो तो मु सहीठी जाउ नै मु एठी केवल आपन को दुईटा इंपोर्टेंट जिनिस कहूची गोटे देशर पॉपुलेशन ग्रोथ बा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टा डिपेंड करूची सेही देशर पॉलिटिकल सिस्टम सेही देशर सोशल सिस्टम उपरे एवं जदि जनसंख्या वृद्धि होची ताहले सेही देशर अर्थनीति उपरे मते तार चाप पड़ी थाउची सेही चाप को केमिति मुक्लेगा कारण आमे पढुथिले सस्टेनेबल डेवलपमेंट आमे पढिले जो प्रीवियस यूनिट रे तो जदि जनसंख्या वृद्धि होची ताहले सेही जगह रे कोन हबो ना हमर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मध्य काम करिवो नै सेही पय वी हैव टू चेक वी हैव टू have a reasonable number of population by which we can grow. The economic system can be checked. एठी नियो माल्थुसियन आसी गले किछि जेमति 1877 रे डॉक्टर सैमुअल वन होटेन बोली वन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ माल्थुसियन लीग Neo Malthusian was not just a campaigning in favor of birth control, it was particularly perspective on the effects of population on human conduct and behavior. जेतो population growth हुए सेतो कोन हुए ना हम जदी गोटे एग्जांपल लेबा साधारण एग्जांपल टी जदी हम मुंबई रो धारा बीटा नेबा हैला एशिया रो लार्जेस्ट स्लम बा जदी हम भुवनेश्वर को देखिबा हैला ए जो अछि स्लम टी हमरो इग्नो रीजनल सेंटर सामना रे जदी हम देखिबा ताले कोन हम देखुछे ना पॉपुलेशन ग्रोथ होची एवं पॉपुलेशन ग्रोथ हेबा द्वारा अनेक गुडे समस्या मध्य देखा जाई थाए सेठी देखा जाई थाए कोन ना लोकंको मध्य रे असंतुष्टता हेई थाए कारण स्केर्सिटी हेई जाई थाए कोन स्केर्सिटी हेई थाए ना
प्रोडक्शन माने कौन ना जेकोसी आम खाद्यपेय जदि कमी जाऊँगी खाद्यपेय जदि भल जिनिस जदि पाऊना लोक जदि सफिशिएंट परिमाण रे जदि खाइबा को मिलु नथो सेतेबेले सिटी असंतुष्ट माने मो कथा है क्रिमिनल काइंड ऑफ थिंग्स ता बढ़ी बढ़ी चलियो सोशल बिहेवियर ता चेंज हिजिवो सामाजिक बिहेवियर चेंज हिबो लोकन को मध्य रे असंतुष्ट देखा दियो सेति पई नियो माल्थुसियन मूवमेंट्स कहउछंती that different from conventional malnutrition position on two counts. It stressed on birth control method and also identify the working class with a problem of overpopulation. से दीट जिनस उपरे नियो माल्थुसियन दीट उपरे बहुत कोन इंपोर्टेंट दियंती सेटा हेला कोन ना केमिति हमें बात कंट्रोल करिवा बात कंट्रोल करिवार जरिया हेला ना लोक जदि एजुकेटेड हेबे लोक जदि शिक्षित हेबे निश्चय से बुझी पारिबे जे पॉपुलेशन बेसी हेले कोन क्षति अछि पॉपुलेशन बढ़िले कोन समाज प्रति कोन तार माने कोन रिफ्लेक्शन हबो बा तार इन्फ्लुएंस ता कोन हबो द्वितीय रे से कहउछंती ना also identify the working class with the problem of overpopulation से कहउछंती ना वर्किंग क्लास रे ओवर पॉपुलेशन देखा जाय कारण वर्किंग क्लास चिंता करंती जे जदि तांकर 2 रु 4 पुओ झियो थिबे ताहाले से माने तांकर पई एसेट हेबे बोली से चिंता करंती से संपत्ति हेबे बोली से चिंता करंती किंतु से संपत्ति किछि समय रे हेई पारेनी जहा मु कहउथली जदि 4 टी पुओ झियो अछंती 2 जण जदि फिजिकली फिट नोंती हैला फिजिकली फिट माने मु कहया कथा मु गोटे एग्जांपल दोछि मो निजे घरर कथा हैला मो भाई इज ए सिकल सेल एनीमिया मो पेरेंट्स सब बेले चिंता कले ना 2 टी पुओ हे गेले बा 2 टी छुआ हे गेले सफिशिएंट बोली किंतु वर्तमान ही इज नॉट वर्किंग ओके all of almost is a liability for us तो कौन हुए ना जनकर इनकम रे अनेक लोक ता ऊपर निर्भर करंती जो द्वारा कौन हुए ना सेठी पई कहा जाय जे जो वर्किंग क्लास लोक अछन तांकर जनसंख्या आमे देखिले एबे जो माइग्रेंट लेबर रे जेतबेले आसुथिले जण जण को पाखरे माने कोन 2 रु 4 ते छुआ कि नै कि इवन प्रेग्नेंट लेडी भी चली के आसथिले तो आमे कोन देखिले ना दुईटा छुआ भी अछंते ता ऊपर पुनी आउ गोटे छुआ भी से पेट पे धर के भी चली चली पहुंचथिले सो दीस आर द प्रॉब्लम्स तापर कोन हुए ना ओवर क्राउडेड इंडस्ट्रियल स्लम्स वर आइडेंटिफाई साइट्स ऑफ मोरल डिजेनरेशन जेतबेले स्लम तयारी हे जाय जेतबेले स्लम हेबार कारण हे थाय कोन ना रूरल माइग्रेशन मु कहउथली रूरल लोक जेतबेले अर्बन को माइग्रेट करि के आछंते सेतबेले कोन हुए ना स्लम रो ओवर स्लम हे जाय स्लम गुडा को तयारी होय एवं सिटी ओवर क्राउडेड लोक देखा जानती जो द्वारा कोन हुए ना पॉपुलेशन रो गोटे समस्या भी देखा जाय थाय से कहउछंती Now, the assumption was access to common and availability of resources would be give the poor little reason to absent from having more children. तो हमें देखु छे जेतेबेले रिसोर्सेस कम अछि संपत्ति कम अछि सेतेबेले जदि ओवर पॉपुलेशन हबो सेतेबेले सेही देशर अर्थनीति ऊपर तारो प्रेशर बढ़िबो सेति पई कोआ जाय नियो माल्थुसियन पोजीशन फाउंड फेवर विथ द एलीट सेंटिमेंट ऑन द इश्यू ऑफ ओवर पॉपुलेशन एठी कहउछंती ना एठी नियो माल्थुसियन कहउछंती ना एटा एलीट लोक मानन को फेवर रही जाउछ कारण एलीट लोक चाहंती बा जो माने पूंजीपति अछंती कैपिटलिस्ट अछंती से कहउछंती ना इट इज गो इन फेवर ऑफ द कैपिटलिस्ट The elite threatened by the growing number of commoners consider birth control as an important means of checking future conflict over their property हैला जेतबेले प्रॉपर्टी लिमिटेड अछि पॉपुलेशन बढ़ुछि सेतबेले कोन हबो ना गोटी प्लॉट पय फॉर एग्जांपल लेट्स से गोटी पेज ऑफ लैंड पय होय तो 4 जण 5 जण लढाई करिवे बा सेही लोकन को ऊपर सेटा प्रेशर पडियो बोली से एलिट एठी माने कैपिटलिस्ट कथा कोआ जाउछि तो आमे देखिबा ना ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड पृथ्वी सारा आमे कोन देखुछे सेटा फ्रेंच हो सोवियत यूनियन हो कि जर्मनी हो कि हमरो इटली हो सब जगह रे एई जो नियो माल्थुसियन थ्योरीटा काम करिया को लागिला तो एठी कोन कोआ जाउछि ना the key supporter of family planning distinguishes neo Malthusian propaganda from what he terms as the freedom of dissemination of medical knowledge and the defense of elementary democratic rights of the citizen both sex एठी से कहउछंती ना हम जेतबेले नियो माल्थुसियन कहउछंती जे बर्थ कंट्रोल को चेक करिया उचित सेतबेले से कहउछंती ना मेडिकल सिस्टम ताकू बहुत इंपोर्टेंस दउछंती बोली से कहउछंती मेडिकल सिस्टम को जेतबेले से इंपोर्टेंस दउछंती ता माने more people are going for abortion and by which they are spending their money and
by which the capitalists are getting that money ସେଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ଇଟାଲୀ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ରୋମ ଅଛି, ରୋମର ସେଇଠି ଏଇଆ କୁହାଯାଏ ଯେ ଭ୍ୟାଟିକାନ ସିଟିର ପୋପ୍ କହନ୍ତି ଯେ if you are going against the abortion system or checking birth system on a unnatural way, that is medicine and all, it is against the norms of the religion। ମାନେ ରିଲିଜିୟନ୍ସ ର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏଇଟା ଧର୍ମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଇଯାଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଅନନ୍ୟାଚୁରାଲ ୱେରେ ଯଦି ଯାଇକି ଯଦି ବାର୍ଥ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ସେଇମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରନ୍ତି। ସେମିତି କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଇଛି କଣ ନା ୱାର୍ଲଡ ୱାର ସେକେଣ୍ଡ ହେବା ପରେ ମାନେ 1939 ରୁ ମାନେ 44-45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି ନା ଅନେକ ଦେଶର ଲୋକ ଯେମିତିକି ଜର୍ମାନୀରୁ, ଇଟାଲୀରୁ, ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଲୋକ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଇଗ୍ରେଟ କରିକି ୟୁଏସଏ କୁ ଯିବାକୁ ବସିଲେ। ଆମ ଦେଶରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଆ ବାଂଲାଦେଶ ୱାର ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ମାନେ କଣ କହିବା ଲୋକ ଦେଶ ଛାଡିକି ମାନେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଲୋକ ଛାଡିକି ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା ପପୁଲେସନ ପ୍ରେସର ଟା ବଢି ବଢି ଚାଲିଥିଲା। ତ ଆମେ ଦେଖିଛେ କଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦେଶ ଚାରିଟି ଷ୍ଟେଜରେ ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଟା ଦେଖିଥାଏ। ଚାରିଟା ଷ୍ଟେଜ ତାର ଥାଏ। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଷ୍ଟେଜ ମାର୍କେଟ ବାଇ ଦି ହାଇ ବର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଥ ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲୋ ପପୁଲେସନ ଗ୍ରୋଥ। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଫେଜରେ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛେ ନା ହାଇ ରେଟ୍ ର ପପୁଲେସନ ଗ୍ରୋ ହଉଛି ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଷ୍ଟେଜ ରହୁଛି ଏବଂ ସେଇଠି କଣ ରହୁଛି ନା ବାର୍ଥ ରେଟ୍ ଟା ହାଇ ରହୁଛି, ଧରନ୍ତୁ 6 କି 7 ଜଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଡେଥ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହାଇ ରହୁଛି। Second stage also characterized by population explosion with improvement in technology and social condition of life। Second stage ହଉଛି କଣ ନା ସେଠି ମେଡିସିନ ବା ହେଲ୍ଥ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରି ଯାଇଛି ଏବଂ social condition ଟା ସେଠି ଆସି ଯାଇଛି। Death rate is slow but the birth rate remains high leading to high population growth। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଜରେ କଣ ହଉଛି ନା ସେଠି पॉपुलेशन ग्रोथ टा सेम रोची, डेथ रेट टा कमी जाउची कारण मेडिकल सिस्टम टा बहुत हेल्पफुल होउची। एवं तृतीय स्टेज रे कोन देखुछे ना बिगिनिंग ऑफ द डिक्लाइन इन द बर्थ रेट ड्यू टू सोशल इकोनॉमिक चेंजेस एंड द फोर्थ स्टेज इज स्टेबलाइज द ट्रेंड एंड एस्टैब्लिश द लो एंड स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ। कोन हुए ना थर्ड स्टेज रे हम कोन देखुछे ना लोक शिक्षित होवंती, धीरे धीरे जानि पारंती जे ना जे ओभर पॉपुलेशन हेबा द्वारा बा बेसी जनसंख्या हेबा द्वारा निजर परिवार रे एवं देश रे कोन से क्षति हे पारियो सेटा से बुझी पारंती। एवं फोर्थ स्टेज रे कोन हुए ना गोटे स्टेज रे थाए, गोटे स्टेबलाइज स्टेज रे थाए जो द्वारा कि गोटे स्लो भी पॉपुलेशन थाए किंतु सीधा सळग सेटा देशर अर्थनीति उपरे वा देशर डेवलपमेंट उपरे सेटा प्रेशर पकई थाए। This interesting aspect of the theory is that population growth was supposed to reflect the level of economic development of a society। तो आमे कोन देखुछे ना ए चारिटा स्टेज रे ना एटा कहा ऊपर रिफ्लेक्ट करूछे ना सेही देशर इकोनॉमी ऊपर बा सेही देशर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऊपर सेटा रिफ्लेक्ट करूछे। इट एस्टैब्लिश ए लो पॉपुलेशन रेट एज ए की इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिकली डेवलप कंट्री। कहउछंती ना जेतबेले लो पॉपुलेशन होउची से देशर इकोनॉमिक कंडीशन टा भलो रहउची बोली कहा जाय। मु गोटे उदाहरण देबी जो डेवलप कंट्री अछंती जेमिति कि जर्मनी हला, हां सेठी आपण जदी जिवे सेठी काम करिया पे लोक नांती किंतु तांकर डिमांड अछि माने सेठी पय तांकर ईस्ट जर्मनी आडू सब अनेक लोक बोलोनिया आडू लोक आसी कि सेठी काम करंती, दिन सारा आसी काम करंती एवं से माने फेरी जानती। तो सेठी पय देखा जाय जे पॉपुलेशन चेक न कले कौन हुए ना देशर अर्थनीति उपरे तार मतलब प्रभाव पड़ी थाए। द पोस्ट कॉलोनियल और द कंट्रीज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, पोस्ट कॉलोनियल जेमिति कि हमर भारत बा थर्ड वर्ल्ड बा डेवलपिंग कंट्रीज हो जाउची ना वर्तमान आमे से न्यू माल्थुसियन एनालिसिस रे अच्छे बा न्यू माल्थुसियन आइडियाज रे हमरो पॉपुलेशन एवं इकोनॉमिक सिस्टम ता अछि बोली देखा जाउची। Reduction of population become a priority with the United Nations। The focus was raising nutrition levels in developing countries and providing better health facility to women and children। तो जेहेतु यूनाइटेड नेशन तार गोटे निजर प्रिंसिपल अछि, यूनाइटेड नेशन जेहेतु समस्त देश को
तार देखिबो तार जनसंख्या तार कोन अर्थनीति सिस्टम एवं को देश रे केते शिक्षित अछंती को देशर अर्थनीति कोन अछि एवं सेही देशर नारी माननकु वा महिला माननकु केते सहायता करा जाउछि सेटा यूनाइटेड नेशन मध्ये निजे देखि थाए एवं तो द्वारा कोन हुए ना सी गोटे प्लान देइछंती जो द्वारा कोन हम देखुचे ना न्यूट्रिशन फर्स्ट इज न्यूट्रिशन फॉर द न्यूबॉर्न एज वेल एज फॉर द मदर हला मांक पई एवं से छुआंक पई ता सहित हेल्थ फैसिलिटी समस्त पई जे जदि से देश रे जदि ओल्ड एज अछंती तांको पई मध्ये हेल्थ फैसिलिटी हेबा मेडिकल सिस्टम हेबा उचित बोली यूनाइटेड नेशन देछि The proposal to set up a population commission come in 1945, which was proposed by the United States of Soviet Russia जोटा अछि एवं युगोस्लाविया ए दीटा जे ताकू प्रपोज अपोज करथिले which माने अपोज करथिले तो हम देखुचे जे main reason for opposing commission was because of it focused primarily on population then on growth, population change and the impending doom following the population explosion rather on the growth. से कहउछंती ना पॉपुलेशन ग्रोथ को न देखि कि से केवल पॉपुलेशन चेंजेस को देखुछंती सेति पय से अपोज करूथिले रशिया एवं युगोस्लाविया. It ignored the role of global capitalist development in the production of economic backwardness in developing countries. The commission was nonetheless formally established in 1946. So से formally ताकू हमें तैयारी कले 1946 रे बोली हुआ जाउछि. It had no decision making power. It worked in collaboration with other specialized agencies of the United Nations such as the International Labour Organization, Food and Agriculture Organizations and the World Health Organization. ए जो ILO तापरे FAO एवं WHO सहित ये मिसी के काम करंती बोली कहउछंती हैला. तो एठी हमें देखिबा जे population पाई politics of population control, environment and gender. Politics ता कांकी पसिला ए जो population explosion रे सेटा हमें देखिबा. एठी हमें देखिबा जे मो किछि स्किप करि आउछि मो एठी देखुछि जोटा कि नियो माल्थुसियन रे देखुछि जे Neo-Malthusian position on poverty and population also failed to explore the role and extent of structural inequalities of class and status, unequal access to the means of production and lack of structural reforms. हमें देखिए जेते बळे गोटी राजनीति जेते बळे हुए पॉलिटिक्स जेते बळे हुए सेते बळे कोन हुए ना किछि देश रे तांकर सब रेशियल बेसिस रे मध्ये हेइ थाए. फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम रे जदि हमें देखिबा प्रोटेस्टेंट आ कैथोलिक तांकर सब देइति भाग रे विभक्त हे के तांकर राजनीति रे आसंती. से राजनीति रे आसीबार गोटे कारण हुए कोन ना सेठी से देखंती एवं निजर पॉपुलेशन को चेक करिया पय मध्ये से मना करंती नै कारण दे नीड नंबर एंड नंबर हैज इट्स ओन इंपोर्टेंस. हमें देखि छे जे राजनीति जोठी अछि सेठी कोन होची ना निजर सेल्फ इंटरेस्ट मध्ये देखि थांती. तो सेही सेल्फ इंटरेस्ट को बजाय रखिबा पय कोन हुए ना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हेबार मध्ये हेइ माने देखा देइ थाए. The mechanism of the labor intensive agriculture sector has accentuated class differences and hastened the marginalization of the lower strata. तो कौन हुए ना जेतेबेले पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कथा पडिछि सेतेबेले जदि राजनीति होछि से राजनीति हेबार कारण होछि ना लोअर स्ट्राटा रे जो माने अछंती तांकर पॉपुलेशन जदि बढ़ी चलिछि that will be hampered to the society altogether. सेति पई अब इंडिया ग्रीन रिवोल्यूशन मु जोटा कहउथली मूवमेंट टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन एंड रियलाइज द गोल ऑफ फूड सेल्फ सफिशिएंसी इन द कंट्री वाज अचीव्ड थ्रू द टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ द मेथड ऑफ एग्रीकल्चर एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड वैरायटी. तो हमें जो हाई यील्ड वैरायटी रो बा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड आनी जेते बेले हमें कोन चाष कले सेते बेले फूड प्रोडक्शन बढ़ी जायछि कारण हमें देखिले जे डिमांड अछि एवं सप्लाई निश्चय करिया पड़ियो. जदि सप्लाई हमें करूने ताहले कोन हो ना देशर जनसंख्या होय तो अक्षय हेकी मरि जेबे. एटा गोटे प्रकार रो राजनीति मध्य एथि पय कोआ जाय कारण गोटे पर्टिकुलर कम्युनिटी रे पंजाब फॉर एग्जांपल हैला सेटा व्यवहार करा गला ग्रीन रिवोल्यूशन तापर सेटा धीरे 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 भारत रो अन्य चारि अन्य कोन स्टेट रे बा राज्य मानकर मध्ये सेटा आरंभ करा जायथिला. The example of interest more
so because it was introduced to boost economic growth and agriculture production. तो आम कौन देखिले ना जनसंख्या बढ़ुची राजनीति सेठी अछि तो एटा कौन करूची ना इकोनॉमिक को ग्रोथ करिवो एवं सेठी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हे परिवो जदि पॉपुलेशन जी बढ़ुछंती ताहले मध्ये तारो कोनोसी इंपैक्ट पकिबो नै बोली कि ए न्यू माल्थेसियंस कहते despite the immediate gains of the green revolution it triggered of a series of social economic and environmental complications जोटा मो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहउथली जे ग्रीन रिवोल्यूशन हला किंतु ताहारो फर्टिलिटी ता जो हवा कथा जमीर उर्वरता धीरे धीरे कमी गला आज तारिख रे सेते परिमाण रे आउ कोन चाष हेई पारु नै अनेक जगह रे हम देखुचे जमी गुडा को पूरा अनफर्टाइल हेगी पड़ीछि. In the absence of land reforms, the commercialization of agriculture benefited to the rich farmers and created condition of indebtedness among the poor farmers. तो हमें देखा गला सेठी गोटे रिच क्लास और गोटे हाई क्लास रो फार्मर आसिले जोठी कि जो रिच फार्मर्स होइले लैंडलॉर्ड होइले जहा कि 100 एकड़ जमी अछि से माने सेठी बेनिफिट पाइले एवं जो माने कि शेयर प्रॉपर जो माने कि कोन भाग चाष करंती से मानकर कोन हिची ना से माने ऋणग्रस्त हेकी रहिले. The poor farmer did not have so much land or the financial resources to benefit from the green revolution. तो कहा गला जे ग्रीन रिवोल्यूशन जरिया रे जे लोक मानकर उन्नति हो सेटा चिंता करा जायथिला किंतु समस्या कोन हला ना ग्रीन रिवोल्यूशन ता समस्त पय हेई परले कारण जो माने छोट चासी अछंती से माने सेटा को करि परले नाही. आमे ए जो बॉक्स भीतर आमे गोटे देखिबा मीथ एंड फैक्ट्स जोडा मु कहउथली एठी गोटे अछि गोटे स्टेटमेंट myth होची poor people will be better off if they had fewer children to feed and clothe. Fact होची कोन ना it depends on what how the children are. मु जोटा उदाहरण दउथिली whether they are asset or they are liabilities से माने हम ऊपर निर्भर करिवे ना से माने हम पई संपत्ति हेबे संपत्ति हेबार जदी जरिया अछि से निजर रोजगार करि पारिबे किंतु जो ताको हेल्थ भलो नथिबो से जदी प्रॉपर्ली एजुकेटेड हे पारिबे नै ताहले जहा एक्सपेक्ट करा जायथिबो से एक्सपेक्टेशन रो बाहर से हे जेबो होय तो से भितरो होय तो धरो जे बेसिक चिल्ड्रन हेले कोन होबो ना दुईटा होय तो जाय कि गुंडागिरी भी करि पारंते से माने क्रिमिनल बैंड ऑफ माइंड भी हे पारंते समाज पई से माने गुटी नॉट वेलकम काइंड ऑफ एनिमल हे जानते तो से जगह रे कोन हुए ना मोर पॉपुलेशन इज ऑलवेज डेंजरस बोली मध्य कहा जाय. सो आमे जानि छे जे जदि बेसी पॉपुलेशन हे गला ताहले कोन होबो ना इट विल बी मोर डेंजरस फॉर द आमे जानि छे डेवलपिंग कंट्रीज रे 18 वर्ष हे गला माने से पिला मानन को छाडी दिया जाय दे हैव टू बी इंडिपेंडेंट देमसेल्फ 13-14 वर्ष बयस रे से मानन को ट्रेनिंग देबा को आरंभ करा जाय से माने जाय कि छोटो छोटो होटल छोटो छोटो ग्रोसरी रे से माने काम सिखंती एंड इट इज आल्सो माय सेल्फ सीन इन जर्मनी है ना जो पिलाटा 14-15 वर्ष हे गला माने से एटा से जीव ही गोटे ग्रोसरी शॉप को एवं काम करिवो एवं पेरेंट्स एटा को दियंते 18 वर्ष हेगले से माने छाडी बट आम देश रे सेटा नो आम देश रे कोन आम देश रे पिला को पाठ पढियो 25 वर्ष पर्यंत पाठ पढियो सेटा सब बेले से पेरेंट पे ही निर्भर रहइबो तो ग्रेजुएशन सरला को से 18-19 वर्ष रहितबो तापर पुनी चाकरी करिवो तो ऑल इट्स इज लॉन्ग मेथड तो एठी कोन हुए ना ए मिथ एंड फैक्ट्स ता एठी हमको देखियो को पड़े. तो ए मिथ रे हमें दुईटा जिनिस देखुचे जे मोर पॉपुलेशन हेले भी असुविधा लेस पॉपुलेशन हेले मध्य असुविधा कारण हम देखिचे अनेक समय रे लोक गोटे संतान थिले मध्य जे छुआ जदी भलो परफॉर्म करू नै होय तो आज काली रो प्रेशर रे आसी कि से अनेक समय रे सुसाइड भी कर दउछंती है तो जो जिनिस गुला को कि अनेक समय रे समस्या देखा देई थाए. As for the environmental concerns, the use of pesticide, chemical fertilizer, hybrid seeds have had negative effect on the soil quality. जोटा हम कहउथली जे जमीर उर्वरता निर्भर करे तार नेचर ऊपर है किंतु कोन होय ना हम आर्टिफिशियल हम जो व्यवहार करूचे सेटा जमीर कोन कहबा उर्वरता को नष्ट करि दिए जो जमीर उर्वरता को जदी नष्ट कर दउची ताहले कोन होची ना पॉपुलेशन ऊपर मध्य सेटार प्रेशर पढुची. मु जो एग्जांपल दउथली कैंसर ट्रेन जदी चालुची हमर कोन अमृतसर रु जदी राजस्थान को ता माने कोन ना सेटिकार ग्रीन रिवोल्यूशन हला किंतु सेना लोकों पय सुविधा हेई परला नै जदी नेचुरल वे रे जाई थानते डेफिनेटली से एते परिमाण रे लोक कैंसर रे
पढ़ी न थांते तो सेति पय कहा जाय indigenous people across the world or tribes they are known in India have collectively campaigned against the destruction of their natural habits. So आमे देखु जे राजनीति एठी केमिति आसी ना राजनीति आसीवर मेन कारण हला ना जेतेबेले वैज्ञानिक माने देखैले जे ओवर फर्टिलाइजर यूज करिया द्वारा पेस्टिसाइड यूज करिया द्वारा जमीर उर्वरता कमी जाउची एवं आज जो खाद्य अनेक परिमाण रे पॉइजनियस हो जाउची सेटा पॉइजन फॉर अस तो सेतेबेले कोन होची ना इंडिजिनियस नॉलेज रो बा निजरो लोकल नॉलेज रो कथावार्ता आसुची एवं से माने मध्ये कैंपेनिंग करिसंती जे नेचर को केमिति सेव करियबो आपण माने जदि यांकर माने कोन आमिर खान करो गोटे देखिथिबे पॉइजन ऑन प्लेट सत्यमेव जयते सेठी आपण माने डिटेल पाइ जेबे यूट्यूब रे अछि सत्यमेव जयते देखिबे सेठी से पॉइजन ऑन प्लेट बोली के अछि से एपिसोड सेठी देखिबे से पूरा हमर केरल रो एवं पंजाब रो पूरा हिस्ट्रीटा जो ग्रीन रिवोल्यूशन हिस्ट्रीटा से देइछंती कु परिमाण रे लोक माने सफर होउछंती आज तारीख रे तो studies on fertility and poverty reveals the complex relationship between poverty and tendency to have more children. तो इठी देखा जाए ना fertility और poverty reveals the complex relationship between poverty and tendency. कौन सी ना जदि गरीब लोक अछंती से कहबे ना मोर जदि चारिटा छुआ हेबे ताले से माने मो पई एसेट हेबे से माने काम धंदा कले हमरो इकोनॉमी बढ़िबो किंतु एटा होची हेई पारे नै कारण अनेक समय रे से माने लायबिलिटीज हे जानती से माने निर्भरशील हे जानती बापा मा ऊपर For one, unlike the neo-Malthusian belief, children are not viewed as a liability but as asset. The motivation to have more children varies from class to class. Landless laborers who depend on manual labor and the poor farmers who cannot afford mechanisms alternative to manual labor prefer to have more children. So, lower class रे जदि हमें देखिबा डेवलप कंट्रीज रे लोअर क्लास रे अनेक समय रे बा हमरो एठी जदि श्रमिक श्रेणी रो देखिबा भारत रे मध्य से चाहती ना माने अनेक चिल्ड्रेन होंतु अनेक छुआ होंतु से माने आगामी दिन रे तांकर एसेट हेबे किंतु सेटा अनेक समय रे हुए नै कारण देशर अर्थनीति उपरे सेटार प्रभाव पड़ी थाए जनसंख्या जेतेबेले वृद्धि हुए सेटा देशर अर्थनीति उपरे मध्य को प्रभाव बा इन्फ्लुएंस पकई थाए जनसंख्या रखिबा पई जो मॉडल मेथड आसिला कॉन्ट्रासेप्टिव बा अबॉर्शन सिस्टम्स हला ए सब अनेक जगह रे व्यवहार करा गला आज तारिख रे अनेक लोक व्यवहार भी करूछंती एवं तो द्वारा कोन होची ना जनसंख्या रो वृद्धिटा कमी जाईछि एवं जनसंख्या धीरे धीरे कमीबारे कमु तो नहीं किंतु गोटे स्टैग्नेंट गोटे स्टेबिलिटी रे आसी जाईछि हम जदी देखिबा मोर रिसर्च रे मु देखिली आदिवासी हमर जो अछंती ओडिसा रे आदिवासी मानकर अनेक पॉपुलेशन माने स्टैग्नेंट हे गलानी नेगेटिव ग्रोथ होची पॉपुलेशन ताकर नेगेटिव अडकु गलानी ता माने जो परिमाण रे ताकर जनसंख्या वृद्धि होतला हमर आदिवासी मानकर ताकर सेही परिमाण रे जनसंख्या वृद्धि होनो किछि किछि आदिवासी मानकर नेगेटिव ग्रोथ चलीछि कारण अनेक समय आगु कोन थिला ना तांकर चाइल्ड मैरिज सिस्टम थिला चाइल्ड मैरिज से माने अर्ली मैरिज करूथिले एवं सेतबेले तांकर छुआ अर्ली माने होथिला किंतु एबे कोन होछि ना अनेक शिक्षित हेबा को बसिलाने एवं से शिक्षित हेबा परे से चाहउछि ना निजरो एस्टैब्लिशमेंट हो निजे गोटे भलो चाकरी करिवे तापरे से बाहा हेबे ए सिस्टम रे कोन होछि ना तांकर पॉपुलेशन ता नेगेटिव वर्ड को जाउछि किछि आदिवासी मानकर तो सेटा मध्य देखा जाइछि तो एठी हम देखिबा जे एठी इंडिया हमर यूनिट 15 रो सेक्शन 4 इंडिया दी पॉपुलेशन एक्सपीरियंस एंड डेवलपमेंटल कंसर्न एठी हमर खाली मुटी के हाईलाइट करि दउछि जे India was one of the first country to recognize the population problem and adopt the official national program on family planning in 1952 जेतेबेले भारत स्वाधीन हला ता परे जेमिति कि प्लानिंग कमीशन तयारी हे गला सेतेबेले फैमिली प्लानिंग मेथड सब माने समस्त अडॉप्ट करिया को बसले कंसर्न अबाउट द राइज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया स्टार्टेड वेल बिफोर इंडिपेंडेंस किंतु जनसंख्या रो वृद्धि जो होउथिला सेटा हमरो भारत रे जो माने बुद्धिजीवी थिले से माने स्टार को कैंपेनिंग कले जे ना भारत रो जनसंख्या वृद्धि होची एवं से कहिले जे ना से चिंता कले एवं से भारत स्वाधीन हेबा पूर्व मध्य भारत रो जनसंख्या केमिति कम हे परिबो ता विषय मध्य से चिंता करथिले द 1930s बिटवीन 1881 रो 1931 पर्यंत India's population grew from 27.7 million to
279 million, and between 1931 to 40 it grew 279 million to 3187 million. तो आम कौन देखुचे ना पाखापाखि 10% ग्रोथ कला इन फर्स्ट फेज रे एवं सेकंड फेज रे एटा ग्रोथ कला पाखापाखि 14. तो आम कौन देखुचे ना पॉपुलेशन ग्रोथ हे चलला एमिति भी कहा जाए जेतेबेले माने जेहेतु एटा रेकॉर्डिंग रे अछि माने अनेक लोक जेतेबेले माइग्रेट करिकि आसिले हमर बांग्लादेश रु एवं तांको भितर कंपटीशन मध्ये हेतिला काहा सहित ना गोटे धर्म सहित अन्य धर्मर मुझे कहवाक चाहे जे हिंदू धर्मर लोक एवं मुसलमान धर्मर लोक जेहेतु मुसलमान बा कुरान रे लिखा अछि ना पॉपुलेशन चेक करिवो नाही माने कोन आर्टिफिशियल वे रे तो सेति पय हिंदू जो माने आसिले बांग्लादेश रु हला से माने मध्ये कहिले जे ना जदि से माने करि परछन्ती 5-6 छुआ आमे काई करि परनु सेति पय सेटा भी गोटे कारण थिला जो कंपटीशन बिटवीन द टू रिलीजियन आफ्टर दिस बांग्लादेश माइग्रेंट सेटा भी गोटे पॉपुलेशन रो गोटे हमरो कारण थिला. तो आमे देखिले जे जदि 14% जदि सेकंड फेज रे जदि बढ़ी छन्ते निश्चय एटा हम पय बहुत कोन कहबा प्रेशर कथा हम कोन इकोनॉमी उपरे हमरो एजुकेशन उपरे हमरो हेल्थ सिस्टम उपरे एटारो प्रेशर बढ़िथिला. The British government was courteous in raising the issue as they had witnessed the reaction of people to birth control back to Britain and also because they did not want to create condition of unrest among the Indians over the issue. British government silent थिला से concern थिला किंतु जेहेतु modern medical system modern medical facility ब्रिटिश बा ब्रिटेन मध्ये आरंभ हे गेला जोथि पय कि से माने concern थिले से इंडिया विषय रे सेतेटा कॉन्शियस हेले ने. तो एठी मु गोटे दुटा उदाहरण जो हमर इंडियन डेमोग्राफर सब कहिथिले सेठो हमें देखिबा जे प्रोफेसर आर.डी. कार्वे इन मुंबई मेड इट हिज लाइफ लॉन्ग मिशन टू कैंपेन फॉर द राइट्स ऑफ द वुमेन एंड एजुकेट पीपल अबाउट बर्थ कंट्रोल. He later became the member of the Family Planning Association of India formed in 1949. In 1935, the All India Women Conference also took the issue of birth control in the annual meeting held in Thiruvananthapuram, Kerala, and adopted a resolution to offload birth control with the view to improve the status of the women in society. So, birth control जो medium रास्ताटा सेतबेलु ही हम देश रे हमें कोन ताकू we have accepted because we want to raise the status or we want to empower the women. Women मानकर जो status टा increase करिया पे सेतबेले हमें सेही कोन बाथ कंट्रोल सिस्टम ताको हमें धरिले. द बेंगल फेमाइन जो बेंगल फेमाइन हे थिला सेतबेले कोन हेतला 1.5 million people died and the inquiry that followed brought to light the effect of rising population on the economy and poverty. Similarly, भोरा कमिटी 1949 मसिया रे कोन कला ना इशू ए पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन एंड प्रिवेंशन फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज. तो अनेक गुडे जेनिस अनेक गुडे प्लान पॉलिसी से पीरियड रे हिथिला. द फर्स्ट 5-year प्लान 1951 to 56 stated intention as follow: the reduction of birth rate to the extent necessary to stabilize the population at a level consistent with the requirement of the national economy will question. Sorry. So बात कंट्रोल टा निहाती दरकार थिला एथि पय कारण नेशनल इकोनॉमी टा को जदी सुदृढ़ करिवार छी. इफ वी हैव टू स्ट्रांग आवर इकोनॉमी सिस्टम देन वी हैव टू एक्सेप्ट द बात कंट्रोल बरी से कहउथिले. सो द न्यूमेरिकल टारगेट और डेमोग्राफिक गोल्स वर सेट द फर्स्ट एंड द सेकंड 5-year प्लान्स. तापरे धीरे धीरे अनेक मेडिकल सिस्टम रे अनेक लोकन को कोन चाकरी दिया गला. सेठो जो एएनएम ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स से मान को चाकरी दिया गला जे से माने कोन कैंपेनिंग करिवे बात जनसंख्या वृद्धि हो द्वारा कोन होबो बा गुटी स्त्री रो जदी गुटी छुआ परे जदी दुईटा कि तीनटा चारटा जदी रेगुलर हे चलिबो तारो स्वास्थ्य अवस्था कोन होबो. सो दे हैव सीन ऑल द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द पॉपुलेशन. ओके कि वुमेन मानकर हेल्थ कंडीशन कोन रहइबो जदी गुटी छुआ होची ताले तारो हेल्थ कंडीशन केमति रहइबो जदी तार छुआ रहइबो ताले केमति हेल्थ कंडीशन रहइबो गुटी छुआरो हेल्थ केमति रहइबो गुटी छुआ केते परिमाण रे खाइबा पाइबो एई सब जिनिस एई जो ऑक्सिलरी जो नर्स माने थिले तांको जरिया रे सब कुहा गला. फोर्थ
plan जोटा 69 to 74 target कला जे sterilization were set up, camps were held to operate on a people to meet targets. Although 61% of the target was achieved, population growth increased at the same rate, which perplexed policy makers and administrators. किंतु सेतबले पॉपुलेशन ग्रोथ हेबा द्वारा माने होउची बोली कि संजय गांधी ठीक अच्छे जो राजीव गांधी भाई संजय गांधी गोटे फोर्सफुल पॉलिसी बाहर कले फोर्सफुल पॉलिसी कौन ना जोठी भी देखिले यंग मासेस एवं कौन सेतबले कौन स्टेरिलाइज आरंभ कर देले जो द्वारा कि सेटा गवर्नमेंट को सेटा सूट कला नै लोक अपोज कले एवं शेषरे इंदिरा गांधी को क्षमा मध्य मागिबा को पड़िथिला तो एई सब अनेक समय हेइछि एवं पॉपुलेशन चेक करिया पय अनेक गुडा विधि कौन नियम कानून मध्य देखा जाइछि ए यूनिट को आमे अल्परे ताको कंक्लूड करिवा सेटा होछि कोन ना द इशू ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल हैज ऑलवेज बीन सराउंडेड बाय कंट्रोवर्सीज द फर्स्ट सेक्शन इलस्ट्रेट हाउ द पॉपुलेशन डिबेट एंड इट्स इंसेप्शन वाज क्लोजली एसोसिएटेड विथ द सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस इन द वेस्टर्न वर्ल्ड सो वेस्टर्न वर्ल्ड जो इकोनॉमी वा सोसाइटी रो चेंजेस आसिला सेही जिनिसटा हमें देखिले जे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हेबा द्वारा religious orthodox concern of depopulation and the availability of living urban employment ill health patients ए सब बढ़िया को लागिला एवं तापरे धीरे धीरे जेतेबेले कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आसिला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आसीबा द्वारा अनेक मेडिकल सिस्टम इंप्रूव करिगला एवं इंडस्ट्रियल मेडिकल सिस्टम इंप्रूव करिया द्वारा कोन होछि ना लोकन को भितरे कॉन्शियसनेस लोक अवेयर हेले जे ओवर पॉपुलेशन हेले कोन असुविधा हो सेति पय अनेक समय से गवर्नमेंट ऑफ पॉलिसी को अडॉप्ट कले गवर्नमेंट रो जो नीति नियम हैला सेगुडा को ग्रहण कले एठी हमें एया भी देखिले जे इंडिया रो ओवर पॉपुलेशन हेबा द्वारा खाद्य पेय रो कोन डिमांड बढ़िला डिमांड बढ़िया द्वारा एमएस स्वामीनाथन को जरिया रे ग्रीन रिवोल्यूशन अनागला एवं ग्रीन रिवोल्यूशन आसीबा द्वारा मध्य अनेक सुविधा हेतिला जे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रे बढ़िथिला किंतु ता सहित फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल माटी रो उर्वरता कमी जायतिला बिकॉज़ ऑफ ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड ओवर यूज ऑफ पोटेशियम ओवर यूज ऑफ यूरिया एंड ऑल सोडियम एंड ऑल तो जोथि पई कि माटीर उर्वरता कमी जाई कि वर्तमान कोन देखा जाउछि ना जनसंख्या वृद्धि हैला किंतु तांकर डिमांड फुलफिल करिया पई माटीर उर्वरता माने कमी जाइथिला तापरे हमें देखिले जे ए यूनिट रे ना हमर जो इंडिजिनियस नॉलेज अछि लोकल नॉलेज अछि जोटा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कोआ जाय जोटा कि लोकल फार्मिंग कोआ जाय जोटा कि जो द्वारा कि जमीर उर्वरता मध्य रहिबो एवं लोक मध्य खाइबो उपाय सेही सिस्टमटा सेही बाबद रे कोन हैला ना कैंपेनिंग आरंभ हैला कैंपेनिंग आरंभ हेबा द्वारा कोन हैछि ना देशर अनेक जगह रे अनेक परिमाण रे ऑर्गेनिक फार्मिंग आरंभ हैछि मु जानि छी ने आपण माने जानि छन कि ने हम ओडिसा रे 125 टी एमिति अछंती एनजीओस जो माने कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करंती ऑर्गेनिक माने जोठी कि से माने कोनोसी फर्टिलाइजर व्यवहार करंती केवल ए जो गोबर खत एवं अनाबना जो पत्र अछि ए सब को नै कि से ऑर्गेनिक फार्मिंग करंती एवं तार चाहिदा मध्य अछि तो ए यूनिट को एठी रखुछि एवं नेक्स्ट यूनिट होछि 16 रे कोन अछि देखिया 16 रे एटा इंडिया विषय रे कहा जायछि तो एठी माने एठी द कंटेंट रे हम देखिबा जे एठी इंट्रोडक्शन अछि द पाथ ऑफ डेवलपमेंट अछि स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी post independence phase of development the present scenario liberalization privatization and globalization information communication technology बा ICT revolution इंडिया रे हेतिला poverty estimates and poverty eradication measures during the reform period development and social sector conclusion so এই जो unit 16 रे हमें we will learn what will be the outcome होछि कोन ना development approach of a pre and post independent India aims and objectives of India's 5-year plans, India's development policies since 1990s, and impact of ICT or
information communication technology development and the policies of liberalization privatization in the social sector. तो एठी मु मोटा मोटा जिनिस केवल मु देखियो को जाउछि जोगुडा के आपण मानकर हेल्प हे जीवो एग्जाम पई सेटा मु देखियो को जीवी इंट्रोडक्शन रे मु समय दउ नै मु दउछि पाथ ऑफ डेवलपमेंट ठीक अछि path of development कौन हम देखिबा ना the path to be followed for the development of any society cannot be easily determined and it requires a great deal of planning before deciding on that. So before developing plan बा जो strategy ता तैयारी हेबा बहुत दरकार थाए so जोथि पई कि plan policy ता निहाती दरकार हेई थाए independent हेबा पर कौन देखा जायछि ना planning derives its objective from the डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमरो भारतीय संविधान बा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अछि सेठी डीपीएसपी जो कोछे हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सेठी एटा लिखा जाय छै जे प्लान पॉलिसी ता करिवा पई इट सेज द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली एज इट मे a social order in which justice social economic and political shall inform all the institution of national life एटी कोन जाउछि जे स्टेट रो तारो राइट अछि स्टेट तारो डिसाइड करिवो जे कोन प्लान कले सेही स्टेट रो लोकंकर उन्नति हेई परिवो इकोनॉमिकली सोशली एवं तांकर हेल्थ वाइज बा एजुकेशन वाइज से माने पाई परिवे से माने जस्टिस पाई परिवे को क्षेत्र ना सोशली से माने जस्टिस पाई परिवे इकोनॉमिकली से माने वेल ऑफ होई परिवे पॉलिटिकली से माने अवेयर हेई परिवे एई जो डीपीएसपी रे एटा लिखा जायछि तो जोथि पई कि सही आधार रे कोन हैछि ना जो प्लानिंग कमिशन हमरो थियरी हेइथिला इन 1950s रे सेठु एठी हमें देखिबा द फॉर्मेशन ऑफ प्लानिंग कमिशन नेहरू जेहेतु प्रथम कोन प्रधानमंत्री थिले तो तांको समय रे आरंभ हेइथिला जोटा थिला कि ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल नेशनल प्लानिंग कमिटी वाज कंस्टिट्यूटेड बाय द कांग्रेस विथ जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन with 29 सब कमिटीज तो सेते बेले बिफोर इंडिपेंडेंट मध्ये से माने चिंता करूथिले जे भारतर अर्थनीति व्यवस्था भारतर प्लानिंग कोन हवा उचित भारतर एटी डाइवर्सिटी अछि समस्त को सब कल्चर लोकन को सब रिलीजियस रो लोकन को सब रीजन्स रो लोकन को नै कि तार गोटे भलो प्लान हेबा उचित जो द्वारा कोन हबो ना लोक मानकर उन्नति हेई परिवो जोथि पई कि कोआ गला जे three plans were submitted in 1944 the Bombay plan the People's plan and the Gandhian plan तो ए तीनटी प्लान 1944 रे माने बिफोर इंडिपेंडेंट एटा तयारी हला तो बॉम्बे प्लान पीपल्स प्लान एंड गांधी प्लान ता ई बॉक्स भीतर दिया जायछि ताको मु देखुने मु देखुछि जे मु एठी चाहिबी जे प्लानिंग कमिशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 15 मार्च 1950 by the resolution of the Union Cabinet the commission asked to prepare a blueprint of first 5-year plan तो जो कमिशन ता तयारी हला से कहला गोटे ब्लूप्रिंट तयारी हो जो द्वारा कि लोकंकर कोन सोशली लोको इकोनॉमिकली एवं लोको पॉलिटिकली उन्नति करि परिबे सो से फर्स्ट 5-year plans रो मॉडल ता तयारी हेथिला since then a number of 5-year plans have been launched while keeping in mind the needs and resources of the country जो प्लान पॉलिसी आजि मध्ये तयारी होछि लोकर हम देशर जनसंख्या एवं हम देशर रिसोर्सेस केते अछि ताकू बेस करि के हमरो 5-year प्लान सब तयारी हेबाकू बसिला एवं सेथि पई देखा गला जे आजि मध्ये हमरो इकोनॉमिक कंडीशन ता भलो अछि हम देशर वर्तमान जो खाद्य स्टॉक अछि सेटा पाखापाखि जदि एई भलिया परिस्थिति रहिबो जो कोविड भलिया परिस्थिति रहिबो कि अन्यान्य जेंति कि नेचुरल कैलामिटीज आसुछि जेंति कि साइक्लोन आसु सेई भलिया परिस्थिति आसिले मध्ये हम देश रे पाखापाखि आ 3 वर्ष लोक खाइबा को पाइबे सेई कथाटा कोआ जाय कारण सेई आकार रे जनसंख्या को देखि कि हमर स्टॉक रखा हेछि हैना तो देखियो जे स्टैग्नेशन ता बा स्टैग्नेशन इंडियन इकोनॉमी रे केते बेले हैला बा गुटे स्थिरता केते बेले आसी गला जो कि इकोनॉमी ता ग्रो करि परला नै at the time of independence the Indian economy was in a very bad shape जेते बेले इंडिपेंडेंट हला भारत सेते बेले भारतर अर्थनीति व्यवस्था इकोनॉमिक कंडीशन ता बहुत खराब थिला कारण ब्रिटिश ताको एक्सप्लॉइट करि के एभलिया परिस्थिति रे कर देथिले जोथि कि हम पाखरे किछि नथिला जेते बेले कि भारत और पाकिस्तान अलगा हेले सेते बेले पाकिस्तान
कोन पाखापाखि 60% हमर जो थिला बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रे सेटा से नै कि जाइथिले हम पाखरे अल्प पैसा रे हमें बढ़ी से भारत रे तो हमें देखि जे इट वाज गोइंग थ्रू ए पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन कैरेक्टराइज्ड not only by poverty but also by one of the lowest level of per capita economic income growth ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ poverty ତ ଥିଲା ତା ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଜୀବିକା ଶୈଳୀ ଲୋକଙ୍କର per capita income ମଧ୍ୟ କମି ଯାଇଥିଲା ଠିक ଅଛି which was approximately 0.5% per annum due to the long spell of colonialism जेहेतु पाखापाखि 250 वर्ष भारत रे शासन कले से ब्रिटिश एवं भारत रो अनेक धन संपत्ति नहीं जाइथिले मु जो कहउथिली कि हम देश रो लुण ମଧ୍ୟ जाउथिला तो से को अवस्था रे सेतबळे इकोनॉमिक सिस्टम थिबा हमें बुझी परथवा हमें देखि परथवा the same feelings were echoed in the first 5-year plans documented. This was primarily because of the basic condition under which an economy can continuously expand were lacking. कारण सेतबळे जे थिला जेहेतु हमरो डाइवर्स समस्त को नै कि गोटे प्लान पॉलिसी तयारी करिया पड़िबो तो सेही पय कोन होई छै ना gradually our economic system was come into the track and the planners जो माने प्लान पॉलिसी तयारी कले सेतबळे से माने भारत रो जनसंख्या भारत रो रीजन को देखिके सब तयारी कले हैला तो उमा कपिला तांकर गोटे बही अछि सेते बही जदी आपण माने पढी परिबे जेबे भी जदी आपण माने यूपीएससी जो माने भी देबा पई चाहौ छथि हैला बा ओपीएससी देबा पई चाहौ छथि उमा कपिला रो इंडियन इकोनॉमी बहीटा पढिबे एटा बहुत बढ़िया ए बहीटा बहुत हेल्पफुल एई थाए तापरे एठी किछि किछि मु कहि दोछि जोटा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज रे कोन कोन सब एथिला आज हम देखिले जे पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड रे जो 5 ईयर प्लान सब तयारी हिथिला तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हेथिला एवं से फर्स्ट 5 ईयर प्लान रे हम कोन देखिथिले ना तारो मोटो थिला टू ब्रिंग द इंडियन इकोनॉमी आउट ऑफ द स्टेट ऑफ स्टैग्नेशन कॉज्ड बाय द सेकंड वर्ल्ड वॉर तो तारो प्रथम ऑब्जेक्टिव थिला हमरो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान थिला 1951 टू 56 एटा थिला कोन ना जो स्टैग्नेट अवस्था रे जो इकोनॉमी ता पडिछि ताको प्रथमे ट्रैक को आनिबा प्रथमे ताको भलो रास्ता रे आनिबा एवं सेटा जो स्टैग्नेट हेबार कारण भी थिला ना सेकंड वर्ल्ड वॉर रो तारो परिणति तो सेकंड तारो थिला ना कोन ना द्वितीय ऑब्जेक्टिव थिला the process all around the balanced development of Indian economy as so as to ensure a steady improvement in the living standard of the people over a period of time दीटा जो ऑब्जेक्टिव नै कि से फर्स्ट 5 ईयर प्लान की हेतिला प्रथम होची जे इकोनॉमी जो स्टैग्नेंट रे अछि ताको लाइन को आनिबा ट्रैक को आनिबा एवं द्वितीय रे लोक माने जेमिति कि भलो खायो माने जे माने कि भोक रे न रहबे समस्त को एंश्योर करा जीवो दैट एवरीबॉडी विल हैव फूड ओके सेटा देखा गला सेकंड 5 ईयर प्लान्स रे किछि एम्स निया जायथिला जो एम्स थिला कोन ना it has to increase 25% in the national income पाखापाखि 25% national income हो तापर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन नेहरूंकर थिला जेतु तांको कुआ जाय द मास्टर ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल कोन इंडस्ट्रीज बोली कुआ जाय से कहउथिले ना इंडस्ट्रीज आर टेंपल फॉर अस बा टेंपल ऑफ इंडिया बोली से कहउथिले तो सी सेतबेले ना रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन द्रुत गति रे इंडस्ट्री सब सेटअप गला एवं तारो ताको इंपोर्टेंस दिया गला कारण ताहा ही कोन होबो ना देशर अर्थनीति को सुधारि बाय हेल्प करियो लार्ज एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जेतले इंडस्ट्रियलाइजेशन हैला निश्चय लोक मानन को रोजगार देबा पई बंदोबस्त करा गला रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ एंड मोर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर तो कोन गला ना हमें मिनिमाइज करले कोन ना ए जो इनकम ता मिनिमाइज करले इनकम कोथि ना लोक दुटी लोकन को मध्य रे दुटी माने गोटे रिच क्लास बा गोटे लोअर इनकम क्लास तांको मध्य रे जेमिति कि पाखा पाखी इनइक्वालिटी जो गैप अछि सेटा टिके कम होबो किंतु आजि पर्यंत सेटा हेई पारु नै जदि हम प्रकृत रे देखिबा the poorer are becoming poorer and the richer are becoming richer and the highest or the gap is quite large third plan ro objective कोन थिला जोटा कि 60 on 66 ठीक third plan ro objective हला जो to secure an increase in the national income of over 5% per annum and at the same time ensure a pattern of investment which could sustain the rate of growth during subsequent plan periods से पीरियड गोटे ऑब्जेक्टिव निया गला
जे नेशनल इनकम रो ग्रोथ होबो एवं से ग्रोथटा जेमिति कि आगामी जो प्लान होबो से ताको भी ता सहित पाखा पाखी ता सहित चलिबो तापर द्वितीय ऑब्जेक्टिव थिला टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स सेल्फ सफिशिएंसी आमे आउ विदेश रु आमदानी करिवा ने हम निजो पाखरे जेति हबो सेटा को आमे चलिबा एवं जिंदगी हम पाखरे शॉर्टेज हबो नै सेटा से ऑब्जेक्टिव ता निया गला तृतीय थिला कोन ना टू एक्सपेंड बेसिक इंडस्ट्रीज लाइक स्टील केमिकल्स फ्यूल्स एंड पावर टू एस्टैब्लिश मशीन बिल्डिंग कैपेसिटी सो देश रे कोन ना रैपिड जोटा कोहा जाउथला इंडस्ट्रियलाइजेशन आरंभ हिगला एवं सेठी स्टील एवं केमिकल फ्यूल एवं पावर माने ए जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट पावर ए गुडा को बहुत इंपोर्टेंस दिया गला तापर यूटिलाइज फुली द मैन पावर रिसोर्सेस ऑफ द कंट्री एंड एंश्योर सस्टेनेबल एक्सपेंशन इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सस्टेनेबल सस्टेन करिवो जेमिति कि कोन ना जो मेन पावर अछंती स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर अछंती हैला सेही मानकु जेमिति कि सब बेल पय यूटिलाइज करा जाय पारिबो एवं से माने देशर एसेट हेबे एवं से माने देश गढिबारे बा नेशन बिल्डिंग रे से माने सहाय्य करिवे ता माने कोन ना निजरो परिवार तो चलैबे ता सहित देश गठन रे मध्ये ताकर सहाय्य हेबो कारण गोटे देशर अर्थनीति जदि सुदृढ हैला गोटे देशर लोक जदि एजुकेशन पाइले भलो से ताले कहो सेही देशर अर्थनीति व्यवस्थाटा से देश स्ट्रांग अछि बोली जणा जाय तापरे पंचम ऑब्जेक्टिव थिला कोन ना to establish progressively greater equality of opportunity and bring about reduction in disparity of income and wealth तो जो disparity अछि जो gap ता अछि जो इनकम करिया लोक मते से गैप ता जेमिति कि कम होबो एवं इकोनॉमी पावर रे बा इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी पावर से सेठी ऑब्जेक्टिव थिला जे इकोनॉमी जेमिति सब बेले पय स्ट्रांग रहइबो से चिंता करा जायथिला 1966-69 रे गोटे एनुअल प्लान आस्थिला मो सेठी जाउने फोर्थ प्लान रो ऑब्जेक्टिव हैला कोन ना द फोर्थ प्लान एम्फसाइज ऑन इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ द लेस प्रिविलेज एंड वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो माने मार्जिनलाइज अछंती जो माने गरीब श्रेणी रो अछंती जो आदिवासी हेले कि दलित हेले कि वुमेन हेले हैला बा अन्यनो से मानकर जेमिति कि इंप्रूव हे परिबो से मानकु जेमिति कि कोन एम्प्लॉयमेंट दिया जाय परिबो से चिंता करा गला तापरे होची इट एम्ड एट राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स टू प्रमोट इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस तो जो मार्जिनलाइज सेक्शन रो लोक थिले तांकर प्रमोशन को वे ना तांको इकोनॉमिक प्रमोशन तांकर एनहांसमेंट ऑफ इकोनॉमिक हैज टू बी देयर करिगी करा गला जो द्वारा कोन ना बाय व्हिच तांकर इनइक्वालिटी ता जो अछि सेटा कमी जीवो एवं इक्वालिटी एवं जस्टिस से माने पाई परियो बोली कि ए जो फोर्थ प्लान रो आईडिया थिला से भली फिफ्थ प्लान जो 74 टू 79 रे हिथिला तारो कोन कहबा ऑब्जेक्टिव्स बा एम्स होची ना कोन ना सेल्फ रिलायंस achieve self reliance and to adopt measures for raising the consumption standard of people living below the poverty line जो लोक गुडा को गरीब अछंती से मानकर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टाकू अपग्रेड करबा एवं तांकर कंजप्शन हैबिट को बढ़ेबा बाय व्हिच दे विल हैव ए गुड हेल्थ एटा गोटे थिला से माने तांकर आउ काम करि परिबे एवं दे विल आल्सो विल पार्ट ऑफ दिस इकोनॉमी सिस्टम सेटा थिला जो फिफ्थ प्लान रो सेउति सिक्स्थ प्लान आसिला सिक्स्थ प्लान रे फुनी से देखिले जे ऑब्जेक्टिव कोन थिला ना रिमूवल ऑफ पॉवर्टी जेमिति कि हम देशरु पॉवर्टी टाको हमें हटेया बोली कि सेही चिंता धारा करा गला अछि तो सेवन प्लान 1985 टू 90 तारो मेजर ऑब्जेक्टिव हैला कोन ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाइबा एवं रेज प्रोडक्टिविटी एज वेल एज ग्रोथ ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन फूड ग्रेन प्रोडक्शन थिला गोटे ऑब्जेक्टिव एवं आउ कोन थिला ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करिबा एटा होची 7 फाइबर प्लान तो 8 फाइबर प्लान से सो ए भली आकारे सब अछि 10th 11th तो 11th 12th 13th तो हमें देखुचे वर्तमान रो जो प्लान चली छि जो प्लान रे हमें देखुचे जो 12 फाइबर प्लान सेठी आशा करा जाय छि जे देशर जो इकोनॉमिक सिस्टम अछि देशर जो जीडीपी ग्रोथ ता पाखा पाखी 7% रहिबो बोली से चिंता करा जाय छि बाय व्हिच पीपल विल हैव sufficient or enough food enough cloth enough good education quality education they will get better health facility ए सब वर्तमान रो प्लान रे रखा जाय छि
मोस्ट इंपोर्टेंट हमर जो क्वेश्चन सब बेले आसे आपण मानकर इग्नोर भी आसे आ एटा हमर भी हमें क्वेश्चन अनेक समय पकई थाउछु एवं ओपीएससी परीक्षा एवं यूपीएससी परीक्षा रे मध्ये अनेक समय रे ए जो एलपीजी जोडे कि लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन एटा अनेक समय रे पचरा जाई थाए तो हमें एटा के देखि देबा जेटा जोटा के मो जो फर्स्ट यूनिट रे जो फर्स्ट क्लास रे कहिथिले तो हमें एठी देखिवा जे लिबरलाइजेशन हेबा द्वारा कोठी हां India opened its economy in easy 90s by adopting new economic policy है ना new economic policy और पीवी नरसिंहा जो थिले सेते बडो new economic policy ता अडॉप्ट करा गला बा मार्केट ता ओपन करा गला एवं structured adjustment program जोटा कि आरंभ करा गला although there had been attempts for liberalizing Indian economy in 1980s it was only from 1991 to 92 that the government of India had been implementing the earnest fairly comprehensive economic reform program under compulsion due to the balance of payments crisis सेतेबेले जो बैलेंस ऑफ क्राइसिस आसीगला बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आसीगला सेतेबेले कोन हला ना लिबरलाइजेशन बा मार्केट को ओपन करया पई सरकार बाध्य हेथिले एठु देखा गला जे कहार साहाय्य रे ना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जोटा अछि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड साहाय्य रे जो मार्केट ता ओपन करा गला The then prevailing perception among the international financial bodies with regard to the payment crisis among the nation was that it was due to the faulty macroeconomic policies that the country had been pursuing. So macroeconomic policy अछि सेटा सेही इये रे पड़ी के कोन हेछि ना देशर अर्थनीति देशर फाइनेंशियल सिस्टम ता बिगड़ी जाइतिला जोथि पई कि सरकार बाध्य हो जाइतिले जे ए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ताको अडॉप्ट करिया पई एठी कोन थिला ना standard structural adjustment measures including devaluation of rupees increase in interest rate reduction in public investment expenditure privatization along with priority accrued to profitability in running public enterprise तो एई सबु न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रे देखा जाइथिला एवं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रो जो लिबरलाइजेशन मेथड ता थिला लिबरलाइजेशन एठी माने कोन ना you have to open up the market for the people or the economy for the people by which they will invest their money and they will get benefit and also it will helpful for the nation growth एठी पई से लिबरलाइजेशन ता करा गइथिला ग्लोबलाइजेशन जोटा मु कहिथिली ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी रे कोन तारो इन्फ्लुएंस ता हेथिला सेटा होछि ग्लोबलाइजेशन द मीनिंग ता एठी जदी हमें देखिबा ग्लोबलाइजेशन मींस इट रेफर्स टू एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड तो एठी हमें देखिबा द टर्म ग्लोबलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी रेफर्स टू reduction of trade barriers with the view to allowing free flow of goods to the country माने ता माने you have to open up borders mean economy the financial कोन सिस्टम ताकू जदी हम ओपन अप करिवा एवं लोकन को अलाउ करिवा जे हम देश रे कोन व्यवसाय करंतु सेतेबेल कोन हो ना सेटा हमें ग्लोबलाइजेशन बोली कहिवा फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट माने बाहर जो माने अछंती इंडियन अछंती बा जो माने भी नॉन इंडियन अछंती से माने चाहिले हम देश रे 49-59 बेसिस रे जो रेशियो थाए से रेशियो रे से माने हम देश रे इन्वेस्ट करि परिबे एवं हम देश रे कल कारखाना रे इन्वेस्ट करि परिबे बैंक रे इन्वेस्ट करि परिबे बैंक एस्टैब्लिशमेंट करि परिबे सेटा भी थिला फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल टेक्नोलॉजी जो फॉरेन टेक्नोलॉजी अछि से गुडा को मध्ये अछि हम देश रे हेई परिबे बोली कुआ गला फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड पावर जेमिति कि आम देश रो अनेक नर्स हजार नर्स है लक्ष हिसाब रे जदी हम देखिबा है लक्ष हिसाब रे केरल रो अनेक नर्स अछंती जो माने कि ए जो हमरो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कोन अमेरिका सेठी अछंती ए अरब कंट्रीज रे भरी छंती ए माने सब सेठी काम करंती सेठीकर जो माने एबे हमें देखुचे जे जो द्वारा कोन हला ना गोटे देशर स्किल लेबर अन्य देश को जाई परला एवं सेठीकर स्किल लोक एठी आस परले व्हेयर इज द ग्लोबल एसेंटा बेनिफिटेड अल्प लोकन पई हेई परिथिला
So globalization of Indian economy refers to the integration of the Indian economy with the world economy. आमे कौन कले ना हमर इकोनॉमी टाकू वर्ल्ड इकोनॉमी सहित इंटीग्रेट कले ताकू आमे मिसेले बाय व्हिच आमे कौन कले ना को वे रे ना लिबरलाइजेशन वे रे कौन कले ना वी हैव ओपन अप द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आमे प्राइवेट लोकन को इनवाइट कले प्राइवेट लोकन को कहले जे आपण माने आसी कि हमर एठी इन्वेस्ट करंतु बाय व्हिच पीपल विल गेट जॉब एम्प्लॉयमेंट पाई परिबे एवं हमर इकोनॉमी ठीक है परिबे दिस रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू इंप्रूव द मीट द challenges of Indian economy. So Indian economy को improve करिया पई ए जो liberalization, privatization and globalization method रे कौन करा गला ना हमर इकोनॉमी मार्केट को हमें ओपन अप कले ठीक अछि तो सेते भीतर को मु जाउ नै से कांसेप्ट को जदी हमें बुझिबा हमें लेखि परिबा हम परीक्षा रे एवं अन्य परीक्षा रे मध्य सो एठी आउ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट जोटा कि आज तारीख रे चली जोटा कि आईसीटी रिवोल्यूशन तो एटा को मुझे कहि दउची आईसीटी रिवोल्यूशन आमे शाम पित्रोदा जदि आपण माने सुनी थिबे शाम पित्रोदा थिले सेतबेले एडवाइजर हमर राजीव गांधी को से एडवाइज करूथिले तो सेतबेले आईसीटी रिवोल्यूशन ता आरंभ हेतिला भारत रे द न्यू मिलेनियम इशर्ड ए वर्ल्ड ग्रेटर इंटरकनेक्टिविटी विथ द ग्रेटर फ्लो ऑफ data and information and shrinking time and national boundaries globalization रे तो इंटीग्रेशन हमें कले लिबरलाइजेशन रे हमें मार्केट ओपन कले प्राइवेट लोकन को हमें आसो बोली कहिले इन्वेस्टमेंट करिया पई हम देश रे इंडस्ट्री सेटअप करिया पई बैंक सेटअप करिया पई किंतु हमें सेटा भी टिके डिले होउथिला डिले माने कोन डिस्टेंस होउथिला किंतु से डिस्टेंस ता जो गैप ता को कोन गला ना आईसीटी ता कमे देला आईसीटी इनफॉरमेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो आसिला ए जो आज तारीख रे जो हमें जो पाठ पढुचे आज कोविड भी चली किंतु हमें ऑनलाइन क्लास हे परछे ई लर्निंग सिस्टम हे परिछि तो सेटा सेते बेले आरंभ हे जाइतिला एवं एया कोन कला ना हमरो जो टाइम ता जो जेति समय लागि थांता से समय ता से श्रिंक करे देला बा कमे देला एवं जो गुड्स एंड सर्विसेज जोटा हवा कथा सेटा बाउंड्री बा बाउंड्री ता आउ देखा गला ने वर्चुअल बाउंड्री रही गला गोटे नेशनल बाउंड्रीज बोली कि केवल रहिला किंतु अन्य पक्षरे देखिले हमें बेनिफिटेड भी हमें हेइछे मच मोर वी आर बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ दिस आईसीटी ठीक अछि द डिजिटल इकोनॉमी ऑफ इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी वाज मार्क्ड एज द एक्सप्लोजन इन द सेलुलर फोन मार्केट तो हमें देखिले जे आज तारीख रे हमें जो इंटरनेट देखुछे बा हमरो जो परिमाण रे हमर जो कनेक्शन बढ़ुची पृथ्वी लोकन सहित माने कोनोसी प्रोडक्ट जदी यूएसए रे आसी गला कि कोनोसी प्रोडक्ट जदी जर्मन रे अछि से प्रोडक्ट हमें शुरू करले हमर देश रे हमें पाई पारुछे इट इज बिकॉज ऑफ दिस ऑल आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रो रिवोल्यूशन जोगु ठीक अछि तो ए जो 90s रे आउ गोटे एथि सब सेक्शन अछि आपण मानकर द पॉवर्टी एस्टिमेट्स एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन मेजर्स ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड जो इकोनॉमी रिफॉर्म पीरियड रे कोन होइछि ना इकोनॉमी सर्वे के करथिले इकोनॉमी सर्वे जो देव एंड राणा डे जो करथिले 1990 रे मेक्स ए कंपैरिजन ऑफ पॉवर्टी सिचुएशन इन प्री एंड पोस्ट रिफॉर्म पीरियड एठी प्री एंड पोस्ट रिफॉर्म पीरियड माने हम बुझे पड़ियो ना इकोनॉमी रिफॉर्म पीरियड ठीक अछि तो हम एठी देखिबा ना रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ द रिफॉर्म पीरियड ए जो इकोनॉमी रिफॉर्म पीरियड ता है ना सेते बेले कोन हिछि ना हमरो रूरल रो पॉवर्टी इंक्रीज हेतिला increase हेतिला the faster decline of rural poverty in 1980s have been halted in the post 1991 period एठी हम कोन देखिथिले ना जो 80 मसिया रे जो परिमाण रे पॉवर्टी डिक्लाइन होतला किंतु सेटा किछि समय पे 1991 रे सेटा
होल्ड अप हेकी रहिगला. There has been decline in the absolute number of poor in the 1980s in contrast to post 1991 period. So increase in the absolute number of poor. एठी हमें बुझिया पड़ियो absolute number माने मिलियन रे बा मिलियन माने एठी लक्ष्य हिसाब रे किंतु हम परसेंटेज वाइज जदि हमें वर्तमान देखिबा हम भारत रे पाखापाखि 21% पीपल आर अंडर poverty line सेटा कोन बीपीएल रे अछंती बोली कुआ जाय. Urban poverty declined much faster than the rural poverty in the post reform period. तो अर्बन पॉवर्टी टा डिक्लाइन कला कारण सेते बेले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आसिला प्राइवेट कंपनीज आसिले हला लिबरलाइजेशन हला लोक समस्त सब काम धंदा करि परले जो द्वारा कि अर्बन पॉवर्टी टा डिक्लाइन करि गला बोली आंकर रिपोर्ट रे हमर देव एम रानाडे सेटा कहिथिले. तो एठी गोटे टेबल अछि से टेबल को मु देखु नै एठी से टेबल रे बहुत गुडा जिनिस दैछि. हमें सेक्शन 8 को देखिबा डेवलपमेंट एंड सोशल सेक्टर डेवलपमेंट एंड सोशल सेक्टर रे हम कोन देखु छे. Now when it comes to education India saw a rise of 18 to 3% in 1951 माने चिंता करंतु 1951 रे मात्र 18.3% लोक एजुकेशन थिले 2001 रे सेटा 64.8% हे गला एवं वर्तमान एटा पाखापाखि 73-74 को आसी गलानी. तो हमें कोन देखु छे ना नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन has provided broader policy framework for eradication of literacy. तो लिटरेसी बढ़ेबारे मध्य ए जो पॉपुलेशन कोन कहबा पॉलिसी गुडा को हेल्प होई थाए. पॉपुलेशन एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम गुडा को मध्य आरंभ करा जायथिला. तो एठी बुझिवार गोटे जिनिस होची कोन ना सोशल डेवलपमेंट रे माने एजुकेशन डेवलपमेंट हेल्थ डेवलपमेंट एवं लोकंकर इकोनॉमी डेवलपमेंट रे कोन कोन सब हेथिला जोटा कि लोकन को सुविधा करथिला एवं हम देशटा गोटे इकोनॉमिक रे गोटे बैलेंस रे आसीगला. इकोनॉमी माने गोटे स्टेबल रहिला जो द्वारा कोन होची ना हमें हमरो देखि परले जे ना वी आर नाउ फिट इनटू टू डू समथिंग फॉर आवर ओन कंट्री. तो सेतबेले लोक मानकर सेही धारणा आसी जायथिला. प्रथम तो एजुकेशन द्वितीयटा कोन ना गुड हेल्थ जो मेडिकल सिस्टम ता आसीला सेठी हम कोन देखिले ना जो पॉपुलेशन हेल्थ गुड हेल्थ कंडीशन पाइबा पई लोक मानकु सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी लो कॉस्ट सैनिटेशन व्यवस्था एवं अनेक गुडे पॉलिसी करा गला जोटा कि लोक मानकर हित पई लोक मानकर फेवर रे सेटा आसीला एवं लोक सेटा को बुझी पारिथिले. एवं एबे मध्य जदि हम देखिबा पाखापाखि 50% हम वुमेन पॉपुलेशन अछन्ते आम देश रे हला आ सेते बेले मध्य से पाखापाखि 48% थिले पॉपुलेशन. तो सेही माने वर्तमान कोन हेछि ना आम देशर इकोनॉमी बा अर्थनीति सिस्टम टाकू आगे नेवा पई गोटे स्टेप आगे अछंती. इन जदि हम कंपेयर करिया मेन एंड वुमेन बा मेल एंड फीमेल आम देश रे. तो एठी मु ए यूनिट टाकू कंक्लूड करिया पई चाहिबी जोठी कि कहा जाउछि जे आमे देखिले जो प्री इंडिपेंडेंट बिफोर इंडिपेंडेंट कोन हेथिला ना देशर इकोनॉमी टा बिगड़ी जायथिला जेटा को ब्रिटिश ताकू एक्सप्लॉइट करिकि अनेक मात्रा रे ताकू कोन कहया एक्सप्लॉइटेशन करिकि नै जायथिला नेचुरल रिसोर्स नै जायथिला एवं सोशल एवं ह्यूमन प्रोग्रेस टा वो स्टैग्नेट हेकि रह जायथिला. फर्स्ट हाफ ऑफ द हमें देखिले से यूनिट कोन ना इंडिया फॉलोड सिंस इंडिपेंडेंस टिल द 90s जे हमें इकोनॉमी रे अनेक गुडे पॉलिसी आनिले जोटा कि पीपल फ्रेंडली हैला लोक मानकर हित रे हैला एवं देश रे हित रे हैला जोटा कि नेहरू कर अनेक रोल थिला जे इंडस्ट्रीज आर मॉडर्न टेंपल्स बोली से कहउथिले एवं से इंडस्ट्री गुडा को सेटअप करिथिले. किंतु अनफॉर्चूनेटली एबे हमें देखुचे आज तारीख रे अनेक जो गवर्नमेंट सेक्टर थिला गवर्नमेंट जो नवरत्न कोन कहबा यूनिट गुडा को अछि से गुडा को प्राइवेट को हैंड ओवर कर दिया जाउछि जो द्वारा कोन होछि ना अनेक लोक जॉब भी हरौछंती अनेक लोकंकर चाकरी भी मिलु नै. कारण एटा कोन हेगला ना गोटे प्राइवेट लोक जतेबेले न बसिया तार निजर संपर्क निजर कोन हिताधिकारी मानकु चिंता करिवो कारण सी पुणी गोटे पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग भी करूथिबो. तो सेतेबेले कोन हबो ना सी जो पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग करजे से पॉलिटिकल पार्टी लोक मानकु फेवर करिवो. एटा नॉट ओनली आम देश रे डेवलप कंट्रीज रे मध्य एटा देखा देई थाए. तो एठी इकोनॉमी रिफॉर्म्स जो हेथिला सेठी हम कोन देखिले ना सोशल सेक्टर रे अनेक परिमाण रे उन्नति आछिला. आईसीटी रिवोल्यूशन आसीबा द्वारा अनेक
कौन समय आमर बंचीगला जो कि आम अनेक परिमाण रे काम काम करि परले एवं काम करिया द्वारा देशर इकोनॉमिक ग्रोथ करि परिथिला एटी कहा जाय ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट आल्सो इक्वली इंपोर्टेंट सेति पई जेतबेले इकोनॉमिक ग्रोथ ता होउची सेति लोकंकर सोशल डेवलपमेंट मध्ये देखियाकू पड़ी सोशल डेवलपमेंट जदि हम देखिबा तो ताहले कोन हबो ना देशर इकोनॉमी भी स्ट्रांग ही पारे India has to achieve a lot more in relation to economy, human and social progress of her people. ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛି ଯେ 10% GDP ହବ ଯେମିତି ଏବଂ ଆମେ world number 1 ହେବା economically world ରେ powerful ହେବା ନା କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ if we provide 100% education to the people, if we provide 100% livelihoods for the people, if we provide बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी फॉर ऑल माने किछि कोन संख्या को समस्त को जदि हम देई परिया सेते बेले ही हम देश कोन हो ना वी विल कॉल दैट आवर इकोनॉमिक सिस्टम आवर ह्यूमन रिसोर्सेस आवर नेचुरल रिसोर्सेस आर ऑल सेफ बोली कहि परिया ठीक अछि तो आमे आउ गोटे 17 यूनिट ता देखि देबा 17 यूनिट होछि मु सुनंतु आपन मानकू ए जो आपनकर एठी स्टडी रे गोटे कनाडा ब्राजिल आउ साउथ अफ्रीका ए चारिटा अछि जोटा कि चारिटा अलगा अलगा यूनिट अछंती 17 यूनिट रे कनाडा विषय को जाईछि 18 यूनिट रे एटा होछि साउथ अफ्रीका विषय को जाईछि तापरे 19 यूनिट रे को जाईछि ब्राजिल विषय रे ब्राजिल विषय रे तो मु ताकू गोटे लास्ट को ताकू रखिबी हैला कारण मु ताकू सेतेटा इंपोर्टेंस एथि पय दोने कारण आपण मानकर एग्जाम को देखि कि बा आपण मानकर राइटिंग को देखि कि सेटा को जोटा हमर इंपोर्टेंस लागो हमें सेटा को हमें पढिया बोली मु चिंता करूची तो मु ए जो तीनटा यूनिट जोटा छै 17 18 19 ए तीनटा को मु रखिछि सेटा को हमें परे केबे गोटे डिस्कशन करे किंतु जोटा निहाती दरकार अछि ताकू हमें आज नेबा तो आज हमें 20 यूनिट रे अछि यूनिट नंबर 20 जदि आपण पाखे बही अछि सेटा जदि टिके बाहर करिके देखिबे इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन एटा को हमें आज पढिबा जोटा कि अनेक समय रे क्वेश्चन रे आसी थाए ए जो इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन रे ऑब्जेक्टिव होछि बा हमें कोन सिखिबा ना हमें एठी सिखिबा द टर्म ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स वेरियस फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स द्वितीय हमें सिखिबा कोन ना द सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन तृतीय कोन ना वेरियस कल्चरल प्रोसेसेस एंड रिलेट देम टू ग्लोबलाइजेशन तो हमें एठी एटा हमें देखिबा मु कहथिली ग्लोबलाइजेशन रो डेफिनेशन होछि ना इंटीग्रेशन ऑफ माने प्रथमटा इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी इन ए सिंगल थ्रेड ठीक अछि सिंगल थ्रेड माने गोटी सूत्र रे जेमति कि वर्ल्ड इकोनॉमी को इंटीग्रेट करियबो सेटा होछि आर सिंपल डेफिनेशन the term globalization can be depicted as increasing global interconnectedness आज तारिख रे जदि हमें देखिबा इंटरकनेक्टेडनेस अछि गोटी देश सहित अन्य देशर संपर्क अछि जो संपर्क द्वारा कोन होछि ना we are sharing our good as well as bad okay we are putting ourselves into a good way rather in a enemy's way it is a process rather than an outcome which refers to the trend towards the growing interconnectedness globalization is what is it is a relation it is a connection it is a interconnectedness between one culture to other culture one country to another country one economic system to another economic system so seita hochi globalization ठीक अछि एठी हमें एटा भी देखि छै it is primarily in is an interchange of economic से कहउछंती ना it is interchange of economic social cultural political and technological attributes कोन ना हमें देखु छै आज तारिख रे जे वर्चुअल हमरो जो वर्ल्ड डेमोक्रेसी हेबा उचित बोली मध्य हमें कहउछे कोन पई ना it should have a world democracy that all should have equal chance to live in this beautiful world बोली कहा जाउछि how
that if everybody get a chance to increase, जदि समस्ते इकोनॉमिकली वेल ऑफ हेबे ता माने कोन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जदि समस्तंकर हबो, समस्ते जदि सोशली इक्वल हेबे, ना कला गरार भेदभाव थिबो, ना कास्ट क्लास भेदभाव थिबो, कल्चरली जदि आमे गोटे कल्चर अन्य कल्चर को आमे जदि अडॉप्ट करिवा एवं आमे सिखिवा, आम कल्चर तांको सिखेइवा हैला, पॉलिटिकल अन्य देशर राजनीति आम देशर राजनीति सहित अलग अच्छी ना नहीं सेटा जदि देखा जाए, एवं टेक्नोलॉजिकल एट्रिब्यूट्स बा हमर जो अच्छी टेक्नोलॉजी सेटा तांको पई केते हेल्पफुल, आम पई केते हेल्पफुल तांको टेक्नोलॉजी सेटा जदि देखा जाए ताहले कोन हुए ना गोटे ग्लोबलाइजेशन बोली आमे ताकू कहबा बा भौगोलिककरण बोली मध्ये कहबा। Though this interchange is going on for times immemorial, this process was termed as globalization for the first time around the second half of the 20th century. तो मु एठी ये डेफिनेशन टाको अनेक थरो कहि सारिछि, तो आमे एठी केवल देखिबा जे यार कैरेक्टरिस्टिक्स गुडाको कोन कोन अछि एवं बा फीचर्स गुडाको कोन कोन अछि। ताको कहा जाए ना इकोनॉमी डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सोशल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन हला एंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये जो चारि प्रकार अछि सेटा एटा तार कैरेक्टरिस्टिक बा फीचर्स बोली मध्य कहा जाय थाए। तो ए जो फीचर्स गुडा को आपण ताको पढ़ी बेटी के आ जेमति कि सर कहउथले हम डायरेक्टर सर, जदि आपण माने जदि एटा टिके टिके ओवरलुक करके आसीबे ताले इजी हो जिवो, कारण से मते असाइन करछंती एवं बहुत फास्ट एटा सारिबाकू कहा जायछि। ठीक अछि, तो आमे प्रथम देखिबा इकोनॉमी डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जोटा हम कहउथली तारो जो चारिटा फीचर्स रो ए गुटी फीचर्स होछि इकोनॉमी डायमेंशन। इकोनॉमी डायमेंशन हम कोन देखे ना, the most important dimension of the current phases of economic globalization are the breakdown of the national economy barriers। तो गोटी कंट्री जो इकोनॉमी सिस्टम अछि ना सेठी ही तारो इकोनॉमी से चलिबो बा से बाहर को जीव नै बा बाहर को कोनोसी प्रोडक्ट से किनिबो नै, ताले कोन होय ना अनेक समय असुविधा देखा जाय थाए। मु आज चाइना रो एग्जांपल नो नै, इट इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक, हमें कंट्रोवर्सी को न जाय हमें केवल बुझिबा कांसेप्ट को बुझिबा। ठीक अछि, जेहेतु एटा गोटे कंट्रोवर्शियल जिनिसटा। द मोस्ट आमे कोन देखुछे ना international speed of trade, financial and production activities, and the growing power of transnational corporation, transnational corporation and international financial institution। तो जो ग्लोबलाइजेशन आसीबो द्वारा कोन होछि, ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट करिया द्वारा कोन होछि ना इंटरनेशनली वी आर स्प्रेड, द ट्रेड हैज बीन स्प्रेड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। पृथ्वी सारा जहा जे जोठी चाहिला से ट्रेड करि परला। आपण माने जानी खुशी हेबे अनेक इंडियन जो हमरो जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स अछि, ट्रेडिशनल अटायर अछि, पट्टचित्र अछि ओडिसा रो, ए सब यूरोपियन बाजार रे अनेक जगह रे देखिया को मिले, अनेक जगह रे से सब एयरपोर्ट रे बिक्री हुए, अनेक जगह रे लोक तार चाहिदा नियंती। तो एक्सेप्ट साड़ी वर्तमान सुधा सेटा ये हे पारि नै, माने मार्केट नै पारि नै, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव अडॉप्टेड मेनी थिंग्स। स्पाइसी फूड हमर जो खाद्य अछि जोटा, जो स्पाइसी फूड वर्तमान हमरो अनेक जगह रे सेटा को अडॉप्ट करलेनी है, ब्राजीलियन अडॉप्ट करलेनी, इंडियन तो कोन कहबा इटालियन धीरे धीरे अडॉप्ट करलेनी, जर्मन धीरे धीरे अडॉप्ट करलेनी। तो बिकॉज़ दे फील दैट इट इज आल्सो मेडिसिनल बोली कि सेति पय से जेटा को अडॉप्ट करछन। ठीक अछि, तो इकोनॉमी रे एटा तो the economic dimension of globalization will be discussed in terms of liberalization and privatization, free flow of trade and सर्विसेस। सो कोन हुए ना जेते बेले हम कहउथली लिबरलाइज हेबा द्वारा माने हमें जेते बेले मार्केट को ओपन कर देले दैट जे भी आसी कि सेठी बिजनेस करि परिबो, किंतु देयर हैव सम रूल्स। ओके, जे रूल्स भीतर रही जदी काम करि परछि बा तार निजर बिजनेस करि परछि, ताले कोन होछि ना वी विल हैव ए गुड कनेक्शन विथ वन कंट्री टू अदर कंट्री। आमे गोटे देश सहित अन्य देश रे हमर संपर्क दृढ़ीभूत हेई परिबो बोली कुहा जाय। आमे जानि से WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बा मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम्स बा एंड ऑफ नेशनल इकोनॉमी ए कोन चाहंती ना गोटे देश रे इकोनॉमी सिस्टम न रही कि सेटा वाइड ओपन हेबा उचित, बाय व्हिच समस्त सब जगह रे जाई कि निजरो व्यवसाय करि परिबे एवं से व्यवसाय जेमिति कि से देश को हाम्पर करिवने, से देश को जेमिति कि तारो इकोनॉमी सिस्टम टाको नष्ट करिवने, सेही कथाटा सी
माने ग्लोबलाइजेशन रे देखा जाय था जेतेबेले ग्लोबलाइजेशन रे फाइनेंशियल मार्केट को इंक्लूड करा गला अनेक बैंक अछि जेमिति कि चाइना रो अनेक बैंक इंडिया रे काम करछन ठीक अछि जर्मन रो अनेक बैंक अन्य देश रे जाय कि काम करछन स्विट्जरलैंड रो अनेक बैंक जाय कि जर्मन रे काम करछन तो कोन हम देखुछे ना ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गुडा को अछि से माने गोटिए देश न रही कि अन्य देश रे मध्ये जाय कि निजरो काम बा निजरो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ता सेटअप करी लोक मानन को सेवा देई पारुछन एठी देखा अछि डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ए सब देखा जाय छी वर्तमान आमे देखि छे ए जो आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज कॉल सेंटर आमे सुनिथिबे जे आमे एठी बसी कि अमेरिका रो जनकर काम मध्ये करि पारुछे किमिते हे पारुछे ना बिकॉज ऑफ दिस आईसीटी बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम कारण जने धर सॉफ्टवेयर कंपनी अछि सैन फ्रांसिस्को यूएसए रे ताले इंडिया रो लोक ताकू ऑपरेट करूछंती ए यूएसए जीवा दरकार ने एठी बसी ताकू से ऑपरेट भी करि पारुछंती तो एटा अछि ग्लोबलाइजेशन रो माने इकोनॉमी सिस्टम रे बा इकोनॉमी डायमेंशन रो ग्लोबलाइजेशन रो बहुत बड़ मुख्य रोल ता थिला मो लिबरलाइजेशन ता कहि देछि प्राइवेटाइजेशन एक लिबरलाइजेशन रो मेन फीचर गुडा को इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे टिके कहि दोछि the main features of liberalization policy of Indian government are general reduction in the role of the state in economic governance जेतेबेले स्टेट पूरा कंट्रोल करूथिला ना सेटा न है कि तारो पावर टाको रिड्यूस करिया तार जो रोल अछि ताको टिके रिड्यूस करिया जो द्वारा कोन हो ना प्राइवेट प्लेयर्स आसी कि व्यापार करि परिबा बिजनेस सही परिबा बा इंडस्ट्री सेटअप हेई परिबा withdrawal by the state from some economic sector and its replacement by the private sector तो कौन हुए ना प्राइवेट प्लेयर सब को थैथान करा गला थैथान करिया द्वारा कौन होछि ना से माने लोक मानन पई जॉब अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट कले किंतु सेठी असुविधा मध्ये देखा जायतिला हम से असुविधा को हमें जीवाने जॉब अपॉर्चुनिटी किछि क्रिएट हेतिला decline in the government or public sector in basic and key industries banking insurance and other public sector undertakings कौन हैला ना जो गुडा को गवर्नमेंट रो थिला पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थिला जो गुडा को कि हमर गवर्नमेंट माने निजो रो थिला से गुडा को प्राइवेट लोक हाथ रे पळै गला जो प्राइवेट हम जेमिति कि अनेक गुडा होटल अछि अनेक गुडा इंडस्ट्रीज अछि से गुडा को धीरे धीरे सेल हे जाउछि बिक्री हे कि प्राइवेट लोक पाखरे जाउछि जो द्वारा कि से तो बेनिफिट पाउछंती वेरेज किछि लोक जॉब भी पाउछंती किंतु गवर्नमेंट जदि हांता ताहले कोन होय ना ऑलवेज इट इज प्रिफरेबल बोली कहा जाय decline in the role of the state in provision of public social service like education housing and health जेतेबेले लिबरलाइजेशन हैला एवं प्राइवेट प्लेयर आसी गले मार्केट को सेटेबल ना लोकन को सेवा देबा लोकन को जो सेवा दिया जाउतिला कमी गला सेटा कमी भी कोन हिछि ना हमें देखु छे जे हॉस्पिटल प्राइवेट हे गला एजुकेशन सिस्टम प्राइवेट हे गला ठीक अछि हाउसिंग प्राइवेट हे गला जो द्वारा कोन होछि ना लोक अनेक अपॉर्चुनिटी भी पाई पारना फॉर एग्जांपल हमें आज तारीख रे जदि देखिबा जदि इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी न थांता हमें अधिक पैसा देकी गोटे प्राइवेट यूनिवर्सिटी रे पाठ पढी पारथांते कि इट्स क्वाइट डिफिकल्ट ओके जेमिति कि हेल्थ सिस्टम जदि गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम न थांता अनेक गरीब लोक अछंती हला जो माने कि प्राइवेट मेडिकल जाई पारि ना थांते हला बा से माने बहुत असुविधा होते किंतु सेटा आज हेई जाईछि कोन पई ना लिबरलाइजेशन रो नेगेटिव इंपैक्ट ता पड़ी जाईछि नेगेटिव इंपैक्ट हेबा द्वारा लोक बेनिफिटेड हेई पारि नांती सेतेटा तापरे हम देखिबा ना फ्यूचर डेवलपमेंट थ्रू वाइडर पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड हेंस मोर डिपेंडेंस ऑन द मार्केट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कोन हेछि ना प्राइवेटाइजेशन हेबा द्वारा प्राइवेट प्लेयर्स आसीबा द्वारा प्राइवेट इंडस्ट्रीज आसीबा द्वारा कोन हेछि ना जो देशर मार्केट गुड्स एंड एक्सचेंज ता केवल कोन हेछि ना प्राइवेट लोकन को मध्य हेछि जोठी कि गरीब गुरुवा लोक बा कोन मार्जिनलाइज सेक्शन रो लोक से माने ताकू भलो से व्यवहार उपयोगी पाई पारले नै तो या होछि हमर लिबरलाइजेशन रो मोटा मोटा फ्यूचर्स ठीक अछि सेठी आउ गोटे होछि जोटा कि प्राइवेटाइजेशन रो मोटा मोटा फ्यूचर जदि हमें देखिबा privatization can be done using any or all of the following techniques बोली कहा गला now what is privatization means the open of market by which
a private player can invest his or her capital in the sector. तो हमें कौन देखिवा ना एठी हमें प्राइवेटाइजेशन रो किछि टेक्निक्स होजी कोन the public offering of shares all or part of the shares of public limited company are offer for sale to the public कौन हुए ना जो पब्लिक सेक्टर जोटा अछि सेटार किछि संगे एटा कौन हुए ना प्राइवेट को सेल करा जाए जेमिति कि हमरो अछि से नियम अनुसार 49 एवं 51 माने गोटे प्राइवेट लोकन पाखरे कोनोसी इंडस्ट्री जदि गवर्नमेंट इंडस्ट्री सेटा पब्लिक सेक्टर सेटार 51% शेयर टा पब्लिक सेक्टर रहिबो एवं 49% से प्राइवेट लोक पाखरे एमिति हेगी ना शेयर बेसिस रे मध्य हेई थाए ए जे प्राइवेटाइजेशन रो सेटा होची गोटे टेक्निक्स private sale of shares all or part of the state owned enterprise is sold to private individual or group of purchasers so कौन हुए ना ये जो प्राइवेट सेल ऑफ शेयर्स प्राइवेट लोकों को ही बिका जाई था एवं सेटा प्राइवेट लोक ही किनी थाए सेटा पार्शियली किनी थाई पारे न ताको पूरा टमेटे से किनी नै थाई पारे मो एग्जांपल दो ने हम देश रे अनेक पब्लिक सेक्टर गुडा को जोटा कि बिक्री ही जाई छी एवं सेटा को प्राइवेट लोक ही ताको मैनेज करूछन ठीक अछि तो एटा किछि किछि तार उदाहरण गुडा को बा किछि किछि टेक्निक्स तो एटी प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हमें देखिले ठीक अछि तो डब्ल्यूटीओ टा को सेतेटा दोने एटी डब्ल्यूटीओ रो मेन फंक्शंस गुडा को खाली देखुचे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जोटा कि गोटे सिस्टर ब्रांच बोली कहबा हमरो कौन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रो बा तापरे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रो एटा होचे सिस्टर बोली भी कहवा जाए ठीक अछि तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एटा तयारी हेथिला केते 1944 मसिया रे ठीक अछि तो 1944 मसिया रे तयारी हेकी सेटा वर्तमान सुधा सेटा काम करि चलछि हला तो एटारो मेन फंक्शन गुडा को केवल कहि दोछि ना इट वर्क्स इट एडमिनिस्टर ट्रेड एग्रीमेंट्स जो ट्रेड एग्रीमेंट गुडा को होछि से गुडा को से एडमिन करे ताको रेगुलेट करे ताको से कोन मैनेजमेंट करे मेंटेन ए फोरम ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन जो नेगोशिएशन हबो गोटे देश सहित अन्य देश बा गोटे इंडस्ट्रियल सहित गोटे इंडस्ट्री रो एटा से कोन करे ना ताको से कोन करंती नेगोशिएशन करे हैंडलिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स जदि कोनोसी डिस्प्यूट होची ट्रेड रे ताहले ताकू से ताकू बुझामणा करे थेबा ता से डिस्प्यूट ताकू निजे रेगुलेट करे थाए मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज ये कौन करे ना जो नेशनल पॉलिसी अच्छी ट्रेड रो से गुडा को से रेगुलेट करि थाए टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करि थाए डेवलपिंग कंट्रीज मानन को आ कोऑपरेशन विथ अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अछंती से मानन सहित तार गोटे कोऑपरेशन करि कि तार एई सब होची तार फंक्शंस ठीक अछि तो आपण माने एटा को पढी नेबे आ जो आकार असाइनमेंट दिया जाइथो से असाइनमेंट गुडा को करि नेबे मु एठी ए यूनिट रो आ गोटे देखि दोसी सोशल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्रथम गला इकोनॉमिक डायमेंशन वर्तमान होची कोन हिटा हमरो सोशल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन एठी हम कोन देखुचे ना it is strongly refuted that the current pace of globalization reflects on the economic front only. The ramification of globalization process reflect directly on the social and cultural arena of human life. जदि economic system जदि भलो अछि ताहले तो भलो अदरवाइज कोन होबो ना सेही देशर सोसाइटी को सेही देशर कल्चर को हमरो इकोनॉमी हमरो ग्लोबलाइजेशन ता सेतेटा प्रोडक्टिव होबो नै बोली कह जाउछि Consequently, understanding social and cultural dimension of the phenomena of globalization is essential to development of rational and considered response to it. सेही पई जो इकोनॉमिक सिस्टम अछि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन अछि ताकू रेशनल आकार रे चिंता करियो पड़ो इफ वी हैव टू सोशली एंड कल्चरली वांट टू डेवलप दिस सिस्टम जदि हमें कल्चरली बा कल्चर रो जदि इंप्रूवमेंट अछि बा सोसाइटी रो इंप्रूवमेंट अछि ताले हम रेशनल आकार रे ग्लोबलाइजेशन ताकू देखियो को पड़ियो द सोशल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द लाइफ एंड वर्क ऑफ द पीपल कारण
ग्लोबलाइजेशन ता इंपैक्ट पकाए इकोनॉमी को नहीं की से सोसाइटी रो स्थिति को नहीं की बा स्ट्रक्चर को नहीं की से सोसाइटी रे को कल्चर अछि से कल्चर को नहीं की एटा ता ऊपर मध्य इन्फ्लुएंस करि थाए सो जेति पे कोहा गला ना एटार इंपैक्ट होची का ऊपर ना से समाज रो से सोसाइटी रो लाइफ ऊपर एवं सेटिकार वर्क कल्चर ऊपर ता सहित एटा कोन होचे ना फैमिलीज एवं सोसाइटी ऊपर concerns and issues are often raised about the impact of globalization on employment तो मु जो कहूथिली जेतेबेले प्राइवेट हाथ रे अनेक इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर चली जाउची सेतेबेले कोन होउची ना अनेक डिसएग्रीमेंट देखा जाए अनएम्प्लॉयमेंट ता बढ़े एवं लोक अनेक काम धंदा मध्ये पाई पारुना जो द्वारा कि कोन हुए ना लोकर कोन कहबा लोकर जो लाइफ अछि लोकर जो वर्क कंडीशन अछि लोकर जो कल्चर अछि तार ऊपर तार इंपैक्ट पकेइबो जोथि पय कोआ गला ना इट्स इंपैक्ट्स ऑन द कंडीशन इट आल्सो डिक्रीजेस द इनकम ऑफ द पीपल इट it's not going to protect the social life of the people beyond the world of work. The social dimension emphasizes security, culture and identity, inclusion or exclusion and cohesiveness of families and communities. So ये जो सोशल डायमेंशन रे नेगेटिव भी अच्छी और पॉजिटिव भी अच्छी ना नेगेटिव रे कौन है ना अनेक समय रे आइसोलेटेड हो जाए गोटे कल्चर जेमिति कि हाबी है माने गोटे दबाव पकई जाए जेमिति कि आज तारीख रे जदि हम देखिबा अनेक आदिवासी कल्चर सेटा धीरे धीरे उभे गलानी एवं वेस्टर्न कल्चर जहां भी कहबा बा मेन स्ट्रीम कल्चर सेटा ताको ऊपर प्रेशराइज ए कि से माने नुवा सिखिबा बसले तो कोन होउची ना इट has a negative impact the positive कोन ना एजुकेशन द्वारा से माने पाई परले जानि परले नुवा कल्चर विषय किंतु नुवा कल्चर ताको रेशनल आकार जदि अडॉप्ट करा जाय ताले कोन हो ना सेटा भलो होंता एठी दुई तीनटा सेक्टर अछि जोटा कि सेक्शन अछि विथड्रॉल ऑफ नेशनल गवर्नमेंट फ्रॉम सोशल सेक्टर ताको टिके आपण माने पढि नेबे लेबर रिफॉर्म्स एंड डिटोरेटिंग लेबर वेलफेयर सोशल कंडीशंस रे ए सब होछि फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर पॉवर्टी टा अछि हला अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस देखा जाए एवं ता सहित माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन ता बढ़े ता सहित कमर्शियलाइजेशन एंड इंडिजिनियस कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडिजिनियस नॉलेज जो थी राइजिंग इनइक्वालिटी इन द वेल्थ कंसर्न सो ए जो पाखापाखी 6-7 टा पॉइंट अछि जो गुडा को कि सोशल डायमेंशन रे आसुची एवं सोशल डायमेंशन जेतोला आसुची कारण एठी हम जदि गोटी गोटी करी देखिबा एटा गोटी गोटी होची माने गोटी गोटी क्लास रो कोन कहबा स्टफ तो मु एठी देखु नै सेठी कल्चरल डायमेंशन ता जोटा मु कहउथिली जे कोन हुए ना इट इंक्रीज पेस ऑफ कल्चरल पेनिट्रेशन गोटी कल्चर जो अछि सेटा पेनिट्रेट करबो आ गोटी कल्चर फॉर एग्जांपल आज तारीख रे हम देश रे पिज्जा बर्गर रो देश हे गलानी नूडल्स रो देश हे गलानी हला कारण एटा कल्चरल फूड ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज ओके इटाली रो पिज्जा ए सब हम देश रे पेनिट्रेट करि गलानी किंतु हम देश रो खाद्य पे अन्य देश को जाकी पेनिट्रेट करि पारन सेही देश रो कल्चरल जो फूड अछि सेटा जेमिति कि एक्सेप्ट हे पारियो सेति पे रेशनल वे रे चिंता करिया को हे थाय बिफोर एक्सेप्टिंग द कल्चरल फैक्टर्स ऑफ द अदर नेशन cultural changes or cultural dynamics has always been a product of interaction with other culture so though individual culture are capable of endogamous development cultural boundaries are quite often porous leading to the interpretation of the culture so हमें इंटरप्रिटेशन केमिति करूछे हमें केमिति बुझुछे से कल्चर टाको तारि ऊपर डिपेंड करूछि तो ए जो ग्लोबलाइजेशन रो अनेक किछि डिस्कशन करिवार अछि जोटा कि एटा आपण माने पढि कि को इजीली बुझी परिबे तो मो एठी आपको कंक्लूड करूछि ग्लोबलाइजेशन as we have seen is it is a integration of world minimizing time maximizing trade accommodating other cultures accommodating other economics inviting private players and looking for the better benefit of the people तो यही सब जिनिस गुडा को हमें एठी देखिले एवं एठी हमें आउ भी देखिले ना दैट इट हैज इंटरकनेक्टेडनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड गोटे देश से अन्य देश
माने संपर्क बढ़िला सोशियली इकोनॉमिकली कल्चरली पॉलिटिकली एंड इकोलॉजिकली तार नेगेटिव भी अच्छी तार पॉजिटिव अच्छी किंतु आमे कोन देखिया ना पॉजिटिव पार्ट टाको बेसी देखिया और रेशनली वी हैव टू यूज द आइडियोलॉजी এটা भी कहा जाए ना ग्लोबलाइजेशन इज एन आइडियोलॉजी बोली कहा जाए कारण इट हैज बीन proposed by the western countries okay so माने बिजनेस करिवा चक्कर रे बिजनेस करिवा पई हला जेतेबेले की प्रपोज करा जाउसी ताको एजेंडा बोली मध्य कहा जाए बिकॉज़ इट हैज एक्सप्लॉइटेड natural resources indigenous knowledge culture of the people okay and social life of the people so kon huए ना it exploited in a different manner under the economic dimension what we have seen is that aspects such as liberalization, privatization, foreign direct investment, infrastructure development, expansion of information technology has been discussed. Okay, ये सब हमें देखिले. सेमिति social dimension हम कौन देखिले ना we have looked various social aspects that have been impact on the everyday life of social beings. तापरे शेषरे हमें देखिले ना cultural dimension of globalization जो थी कि गोटी culture interact करूची आउ गोटी culture सहित बा गोटी देशर culture अन्य गोटी देशर सहित interact kari paruchi and we are learning from both the sides but we have to accept which is better for us which is good for us and which is better for them and which is blindly or we are not supposed to take everything as taken for granted for example आज तारिख रे मु गोटे एग्जांपल दउची गोटे दिन रे मु पाखा पाखी 30 जण पिलां को फोन कली हला हमको गोटे टास्क दिया जायछि आदिवासी पिलां तो वो 30 जण पिलां को जेतल फोन करूची तो फोन रे तांकर कलर ट्यून सब विदेशी म्यूजिक अछि ठीक अछि तांको निजो म्यूजिक नाही कलर ट्यून रे बुझा पड़छि तो हमें बुझी पड़छि जे हमें केते परिमाण रे तांकर बा वेस्टर्न कल्चर रो जो सॉन्ग हला बा डांस हला सेटो को हमें ग्रहण करि नै छै जो जिनिस की आज हमें देखियो पाउ छै ठीक अछि सो साइड बाय साइड देयर इज ए resurgence of cultural nationalism in various parts of the globe तो सेति पई कहा जाय ना ये जो कल्चरल नेशनलिज्म वर्तमान सब जगह रे अनेक जगह रे आरंभ हे गलानी इकोनॉमी नेशनलिज्म आरंभ हे गलानी तो कोन पई ना इन ऑर्डर टू शेप द कल्चर in order to shape the social life of the people and also in order to shape the political life of the people with this I thank you all yeah Santosh sir Yes. I'm winding up here it is almost Anybody any question? Student, any question? Okay, thank you very much. Okay, tomorrow we'll join on same time, 5:30. Okay, thank you very much, Birendra sir. Thank you, sir. Thank you. Turn off the tab, turn off tab, turn off tab, present now.